to speak out and be seen as the face or mascot of the Congress party. But within the larger India alliance, do you really want to position him as as the rival to Prime Minister Modi? Huge question mark. We are already being told of the possibility that when this India alliance meets later this month in Mumbai, Nitish Kumar could well be made the convener and Sonia Gandhi possibly once again chairperson. So I think the Congress is a section at least is very conscious of not making this a Rahul Gandhi versus Modi fight. But, Team Rahul may well go all out once again to project Mr. Gandhi, and the media certainly will do so. So the Congress will have to take a calculated gamble if they want to make this Rahul Gandhi versus Modi once again. My sense is they will try, if to whatever extent possible, to try and suggest that Rahul Gandhi, yes, is a mascot of our alliance or the anti-Modi, anti-BJP alliance, but he is not necessarily our prime ministerial candidate. That issue will not be decided before the Lok Sabha elections of 2024. Yes, Rajdeep, also a section of the Congress leaders were in fact fearful, or rather almost getting prepared for this favourable decision not coming Rahul Gandhi's way, in the sense that they thought perhaps 2024 Rahul Gandhi may not even get an opportunity to contest. Now that he will, the big question mark is whether Mr. Gandhi is going to be willing to take on Smriti Irani from Amethi, which has always been a Gandhi bastion. Well, if that question is looking too far into the distance, and we're not sure about that. There's even one view within the Congress that Rahul Gandhi should voluntarily say that I'm not in the prime ministerial race. I doubt whether that will happen, but that's one view being expressed, at least privately, among some of the India alliance partners. They think that Rahul Gandhi is a good campaigner, but Rahul Gandhi need not necessarily be projected as prime ministerial candidate. Where he contests from? Well, only last week he was in Wayanad, and the sense you get is that is seen by the Congress as a safe constituency. Will he also contest Amethi? Will his sister Priyanka Gandhi Vadra, as some are suggesting, possibly contest Rai Bareli, another family pocket borough? These are all questions blowing in the wind. The fear that the Congress must have is that the moment you do that, the dynasty charge will return. Mr. Modi will play Kamdar versus Namdar politics, and the Congress could be pushed on the back foot. So the Congress is going to have to nuance its position on these issues. Smriti Irani versus Rahul Gandhi in Amethi, not certain as yet whether that will happen. Rajdeep, my last question to you is about what the BJP essentially does next. The reaction first from the BJP when Rahul Gandhi's conviction was stayed by the Supreme Court on the 4th of August was that this isn't going to be the end of his troubles. So the BJP said there are several cases pending against Mr. Rahul Gandhi. So I don't think and correct me if I'm wrong, that there was a possibility that this sort of a euphoria that we're seeing might just be short-lived. Well, I think that for the BJP, there are two views again. One view is that, let's make this once again Modi versus Rahul Gandhi. If the Congress wants to pitch Rahul Gandhi, that's only to our advantage. The BJP has a fixed narrative when it comes to Rahul Gandhi by calling him basically a dynast, a Namdar, and they will continue to push that. So a section within the BJP believes that Rahul Gandhi returning to parliament is actually a blessing in disguise, because they can then position the battle as Modi versus Rahul. However, there is another view that is slowly emerging, that Rahul Gandhi in 2023-24 may not be the Rahul Gandhi of 2018-19, because this time some of the issues that he's taken up are issues that, whether one likes it or not, have struck a chord. And the BJP is conscious of the fact that the Congress, like it or not again, remains its principal adversary in several parts of the country. So while they may rejoice temporarily in the fact that they think that they can repeat a Modi versus Rahul fight to their advantage, they're also aware that this wider India alliance with Rahul Gandhi part of it could pose a slightly more complicated challenge in 2024 compared to 2019. Rajdeep, be with us. In fact, I'm just going to come back to you in a few moments from now. Several reactions that have been pouring in after the notification of the Lok Sabha Secretariat came through. Let's go straight to them. हमको इजाजत है अंदर जाने की। तो यहाँ पे देखिए विक्ट्री साइन जो दिखाते हुए तमाम सांसद खड़े हुए हैं और
और कांग्रेस के सांसद खड़े हुए, बीजेपी के राहुल सिंह जीते जा रहे हैं। आज बड़ा दिन आप लोग के लिए। हमारे लिए नहीं, देश के लोकतंत्र के लिए। जब एक सत्ता के अहंकार में चूर सरकार ने अपने एक एमएलए से एक फर्जी गैर संवैधानिक स्कीम करके किया है, तो निश्चित रूप से आज देश के संविधान की लोकतंत्र के लिए बड़ी लोकतंत्र की जीत है आज। बिल्कुल लोकतंत्र की जीत है और हम सब राहुल जी का इंतजार कर रहे हैं। लड्डू मन में लड्डू फूट रहा है ना, तो खाने से ज्यादा तो अंदर से खुशी है ना। और राहुल जी का इंतजार देश की संसद कर रही है, लोग कर रहे हैं यहाँ पर। वो आए बोले, देश उन्हें सुनना चाहता है। राहुल गांधी के आने से विपक्ष को भी ताकत मिलेगी। हाँ बिल्कुल मिलेगी। हम सब एक हैं। संपूर्ण विपक्ष आज बहुत खुश है कि लोकतंत्र की जीत हुई है और हम और मजबूत हुए। और ये वो वक्त है, देखिए जे बी मेहता साहब भी मैडम भी आ गई है, और ये वो वक्त है जब वो आए बोले, देश उन्हें सुनना चाहता है। राहुल गांधी के आने से विपक्ष को भी ताकत मिलेगी। हाँ बिल्कुल मिलेगी। हम सब एक हैं। संपूर्ण विपक्ष आज बहुत खुश है कि लोकतंत्र की जीत हुई है और हम और मजबूत हुए। और ये वो वक्त है, देखिए जे बी मेहता साहब भी मैडम भी आ गई है, और ये वो वक्त है जब लगातार अग्नि परीक्षा लोअर हाउस और अपर हाउस में दोनों जगह है आप लोग की। राहुल गांधी का कमबैक। Yes, we are waiting for the moment. अब नोटिफिकेशन भी आया है। It's only a matter of few minutes. आएंगे राहुल गांधी Of course. मैडम पूनम देवी जी बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं। वो मुस्कुरा रही है आज तो आप। बिल्कुल मुस्कुराहट, खुशी का माहौल है तो क्यों नहीं मुस्कुराएंगे। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे कांग्रेस के तमाम सांसद काफी गदगद नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि राहुल गांधी की एंट्री किसी भी वक्त हो सकती है। और इनको कंग्रेचुलेट करते हैं और स्पीकर साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कोई विलम्ब नहीं किया और राहुल गांधी जी की सदस्यता को रिस्टोर किया। थैंक यू। तो डिम्पल यादव भी यहाँ पे कहते हुए कि राहुल गांधी की सदस्यता रिस्टोर हुई, इसके लिए स्पीकर साहब का हम धन्यवाद करते हैं। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। Right, so he's in fact heard from Mosmi, who is standing right outside gate number 4, inside, in fact, right at Parliament, from where Rahul Gandhi is expected to enter. That's his usual place for members of Lok Sabha. That's where they usually enter the Parliament building from, and that's where Mosmi is getting in reactions from a very, in fact, members of the Parliament of the Congress were extremely happy. But these pictures, in fact, are also of opposition members who've come together in joining in the celebrations of Rahul Gandhi getting back to Parliament as an MP. Aishwarya, in fact, is with us. Aishwarya, we are expecting Rahul Gandhi to be back in Parliament any moment. 11:45 is what we were told. So I think just before Lok Sabha convenes at noon, he is going to be there, isn't it? Well, definitely, you know, big thing. Today is a big day for the Congress party, and that is exactly what they were even hoping for, Sneha. You know, when we spoke with those people who are close with Rahul Gandhi, they said that they had full faith in the Supreme Court, and that was the reason why they were quiet and they were just taking the legal route. The moment the Supreme Court pronounced the verdict, then they went to the Speaker of the Lok Sabha, that is Om Birla, and spoke with him and told him that Rahul Gandhi now needs to come back as an MP. It needs to be restored. His status needs to be restored, and even the Speaker did not delay it, and we did see the notification coming out early morning about 10 a.m. today, where Rahul Gandhi has been reinstated as an MP. We will now have to wait and watch what exactly Rahul Gandhi does when he enters the Lok Sabha. Will he be the one who will, start off and ask questions of the government? Because that is what we saw in the last time in Feb, that it was Rahul Gandhi who was the driving force. Will that be something that we will see in couple of hours or in days to come is the big question now. But for the Congress party, today is a milestone, definitely. Even for the BJP, they will also keep a hawk eye on what exactly the strategy of the opposition and the Congress party will be going forward now once Rahul Gandhi is back in the Lok Sabha. Sneha. So what is going to be the strategy? It remains to be seen, but certainly expect Rahul Gandhi to be in Parliament today. As far as his presence in the House is concerned, given that he's just been reinstated as an MP from Wayanad in Kerala. Pictures, in fact, are right now coming in of Rahul Gandhi. These are pictures, in fact, of Rahul Gandhi. In fact, we'll be getting in more details in a few moments from now, but presumably this is Rahul Gandhi's
in the car in which we see has Rahul Gandhi in it, and they're moving to Parliament, given that he's expected to be in the House just before Lok Sabha convenes at noon, in just about 11 minutes from now or so. So we will have those first pictures on India Today of Rahul Gandhi entering Parliament once again. He's been in fact was suspended, or rather he was disqualified as an MP 4.5 months ago. A reaction also coming in from Congress MP Manikam Tagore. Let's listen in. अभी पाप और मुक्त Justice has prevailed and conspiracies has been defeated. We are very happy that Mr. Rahul Gandhi's return in Lok Sabha and Parliament will give a lot of energy for the opposition and the India Alliance particularly. Right before the no confidence motion is going to come in the Lok Sabha. Yeah, this is going to be a very important thing for Congress and the India Alliance because no confidence motion which the opposition alliance has moved it on the subject of Manipur. The Prime Minister is not ready to come to the Parliament. The whole session we are fighting for only one demand, that Prime Minister must come to Parliament. Still that has not happened, but we will continue with our demand today also about Prime Minister should come, and we hope that Rahul ji should participate in the no confidence motion debate, and party will decide about his speech in the Parliament. So there you are, Congress MPs in an upbeat mood with Rahul Gandhi being reinstated. Most missing, Delhi for India Today. Continues, in fact, to be with us on the very latest. We've seen pictures, Aishwarya, of Rahul Gandhi leave 10 Janpat, where he was, in fact, staying with Mother Sonia Gandhi, all set to enter Parliament in a few moments from now. Well, Sneha, you've made a very interesting point. The house from where Rahul Gandhi left, that is 10 Janpat, the house of Sonia Gandhi. Now, will he get a house? Now, that also is a big question which will be answered in days to come, because now he is an MP. So, one of the first things that was being done when he was no longer an MP was that he was asked to vacate the house where he was staying for almost the past 1 decade. So, that's also a question that the government will now have to answer. Rahul Gandhi himself will now have to see, the place where he will be staying. So, those are the things which we will see unfold over the last couple of days. But at the moment, all the eyes, in fact, all the top Congress leaders, some people from the Samajwadi Party also already present at gate number 1 to welcome Rahul Gandhi back. This, in fact, is also a big boost for the opposition. But, we have seen how over the last 2 meetings that took place, where the opposition coalition renamed themselves as India. What will be the strategy going forward? Will it be a debate between Rahul Gandhi and Prime Minister Narendra Modi? That's something that now everyone will be very keenly watching. And the questions that Rahul Gandhi will now be asking of the government of Prime Minister Narendra Modi. Will Manipur once again be the big question? Those are the things which everyone will now, will be looking at very keenly. In just a couple of minutes from now, Sneha, we will see Rahul Gandhi walking, from gate number 1 and going towards the Lok Sabha. 12 o'clock is when, the Lok Sabha session will once again begin. All those eyes will now be on the way the Congress party takes this forward. The top leaders of the Congress party. We also saw how Adhiranjan Chaudhary, in fact, made sure that... Yes, coming back to you in a few moments from now, Aishwarya. In fact, I'm going to go straight to Rahul Gautam at 10 Janpat, who sent us those pictures of Rahul Gandhi, who's just left 10 Janpat, Rahul, and is on his way to Parliament. Absolutely, Sneha. Rahul Gandhi is now heading to Parliament, and at gate number 1, we are learning that the entire, camp of Congress MPs are going to be there to give a grand welcome to Rahul Gandhi, who's returning after... Yes, and Rahul Gandhi has indeed reached Parliament. We have a confirmation, Rahul Gandhi, pictures of Rahul Gandhi right now entering the Parliament building. As you can see in these pictures, Rahul Gandhi, in fact, has entered Parliament. These pictures are in fact from Delhi's Vijay Chowk, from where the MPs in fact enter the Parliament building. That's where Rahul Gandhi is entering the Parliament building from. He is going to be attending the proceedings, if at all the House functions, and that is something that remains to be seen, given that houses have not been functioning. The demand of the opposition remains that the Prime Minister make a statement on Manipur. Lok Sabha was adjourned till noon today, and these are pictures, in fact, of Rahul Gandhi leaving 10 Janpat and entering Parliament. Just a few minutes, in fact, away in Lutyens, Delhi. Rahul Gandhi is back as an MP from Wayanad.
and is now entering Parliament. We'll be getting in more details from our reporters who are inside Parliament, tracking all of those details. Remains to be seen what does he do in his on his first day, really, as MP after being reinstated. Gandhi has reached Parliament, and this is, in fact, these are pictures of his convoy, which has entered Parliament House right now. Gandhi is back as a member of Parliament from Wayanad in Kerala and is going to be taking part in the no confidence debate tomorrow against the BJP government, against Prime Minister Narendra Modi. Rahul Gandhi is, in fact, inside Parliament right now as we speak. Lok Sabha is going to be convening in just about 6 odd minutes from now, where proceedings are going to be beginning, in fact, in Lok Sabha, which was earlier adjourned after there was a ruckus, as always, that was seen inside the lower house. Rahul Gandhi is now in Parliament, and it remains to be seen how he takes on the government and the BJP-led central government and the Prime Minister in the next few days remaining that we have of this monsoon session. Of course, the debate on the no confidence motion tomorrow itself. Pictures, in fact, from gate number 4. What we see is members of Parliament there, Adhir Ranjan Chaudhary, Pramod Tiwari and others who are all ready to welcome. Not just that, interesting that we see Shiv Sena Sanjay Rao as well. So we have other opposition MPs also. Interestingly, waiting for Mr. Rahul Gandhi. All right, so pictures of the opposition, not just the Congress. At gate number 4, you in fact saw several leaders of the opposition who are ready to welcome Rahul Gandhi inside Parliament. They've united on this issue as well. So it's a grand welcome really for Mr. Rahul Gandhi just at the gate number 4 of Parliament, where there are in fact opposition leaders. Rahul Gandhi, in fact, right now, as you can see on your screens, are paying respects to the father of the nation. That's the massive Gandhi statue at Parliament. Rahul Gandhi first paid respects to the father of the nation. Hugely symbolic and perhaps even expected. He's not been in Parliament for 4.5 months now, and he's back as an MP today. He chose first to pay his respects to the father of the nation, as you saw in those pictures, and then all set now to enter the building. Pictures of Rahul Gandhi. First, he's entered a Parliament complex, and then, in fact, he paid respects to the father of the nation. Now he's going to be moving inside Parliament through gate number 4, where opposition MPs, all of the members of the opposition MPs, the India bloc, are waiting, in fact, to welcome. Essentially, Gandhi gets a grand welcome inside Parliament, with the India bloc also, in fact, rallying around this point. They were the first, in fact, to speak about his disqualification and how unfair that was when he was reinstated. In fact, when the Supreme Court of India on the 4th of August stayed his conviction and his disqualification, opposition MPs also again spoke about the fact that they welcome this decision. We're bringing to you fresh visuals of Rahul Gandhi as he's just arrived inside the Parliament after almost a 135-day hiatus. Rahul Gandhi now back in action. Of course, this was a long-drawn legal battle, a big relief that's come in from the Supreme Court that stayed the conviction in the criminal defamation case on the Modi surname.
The controversy went on for nearly 2.5 months, about 135 days after Rahul Gandhi now back in the parliament. These are first images of Rahul Gandhi giving the Congress party a good impetus right ahead of the no trust, no confidence motion that will be playing out in the House tomorrow. Today is a big day undoubtedly, as the Delhi Services Bill will be presented in the Rajya Sabha. Rahul Gandhi giving Congress itself as a party a big boost as he arrives, and those are the first images that we flashed to you right here on India Today at the Parliament premises. This is Rahul Gandhi all back in the Parliament with huge celebrations that broke out among the Congress cadre. Across the country we saw celebrations galore. Of course, the opposition, the Congress, claiming that all the attempts by the BJP to suppress Rahul Gandhi, now the Supreme Court has given us justice. He will not be, they will not be able to stop him from speaking the truth, etc. We heard all sorts of narratives playing out with the Congress accusing the BJP of deliberately trying to hold him back from entering the parliament. And now they claim they've got justice. Gary. राहुल जी आपका स्वागत किया राहुल जी कुछ कहेंगे अभी सभी ने आपका स्वागत किया राहुल जी डिस्टेंस बॉस डिस्टेंस रिक्वेस्ट प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट राहुल गांधी कल तक राहुल जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है, और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है, पुरकायस्त उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को, या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं, उसके बारे में सर। दूसरा, मैं इस सरकार से मांग करता हूं सर कि जब भी भारत में संकट आया हेलो चेक आ जाओ बाइक लगा रहे हैं यार लोग। हेलो चेक Rahul Gandhi is now inside the parliament. He's now attending the first day, starting this week. Almost 10 days of the monsoon session has already completed. Not much has really come out of it. With Rahul Gandhi now in the House, will there be fruitful discussions is the question here. Rahul Gandhi on the right-hand side, we bring you visuals of Rahul entering the parliament. On the left, he's seated inside as the parliament proceedings continue. राहुल गांधी की गाड़ी आ रही है, इंडिया टीम के तमाम मेंबर्स हैं। राहुल गांधी सदस्यता बहाल हो गई है, दौड़ लगी है तमाम सांसदों द्वारा, और इंडिया पार्टी तब से राहुल गांधी के स्वागत में यहाँ पे इंतजार कर रही थी। राहुल गांधी सीधे उतर के संजय सिंह जो सांसद है उनसे शायद मिलने के लिए जाए, और ये राहुल गांधी की संसद में पहली झलक राहुल जी आप देखिए।
आज तक कार्यवाही छोड़ने का काम 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Chaos inside the house. The house is now adjourned until noon. Of course, Rahul Gandhi has now reached the parliament premises. Hours after the Lok Sabha Secretariat gave him a clearance after they received the Supreme Court's order that stayed his conviction in a criminal defamation case. Rahul Gandhi now has been given a go-ahead. Meanwhile, the House has been adjourned. It should resume at 2 p.m. Those are the first images of Rahul Gandhi arriving at the parliament premises. Of course, a huge celebration among the Congress cadres across the length and breadth of the country. You're seeing Congress offices in exuberant celebrations. Rahul Gandhi about 135 days later, and a long, prolonged legal fight after he's now back in the parliament. Amit Bharadwaj brings us more. Amit, give us a sense of the celebration that we see inside the parliament. And do we see this kind of happiness just on the faces of Congress members, or is it a common sentiment among the alliance partners, the India alliance? Well, Nabila, a couple of minutes back when we were speaking about the celebrations at the AICC, I had said that these visuals will not remain limited to the AICC headquarters in the national capital, but will spill over to the parliament as well, which is not far from the 24 Akbar Road. And inside the parliament right now, as we speak, what we had seen is that Rahul Gandhi entering the parliament complex, he being welcomed by the Congress MPs. After that, Rahul Gandhi went to the Gandhi statue with Congress MPs, and while he was walking, there was a grand welcome of sorts as much as possible inside the parliament complex by the Congress MPs. And there are other visuals as well where you have many of the India Bloc Party MPs as well, whether it be the Congress's MPs, the Aam Aadmi Party, Trinamool Congress, all of the India Bloc Parties MPs standing together, most of them from Rajya Sabha standing together and sloganeering to welcome Rahul Gandhi. So these are visuals that we normally do not see inside the parliament, where a leader from a specific party is being welcomed in this manner and sort by other opposition parties as well. But this is happening because, remember the way and manner in which Rahul Gandhi was immediately disqualified from the Lok Sabha as a member of parliament right after he was convicted in the Surat defamation case, and after barely within 72 hours the eviction notice as well from for his house had come. So the opposition parties also want to make sure, rather the India Bloc parties want to make sure that this moment when Rahul Gandhi is returning to the parliament complex, the narrative is set right, the optics are set right, and the message comes across as if a great injustice was handed over to Rahul Gandhi and the opposition parties. In the way and manner Rahul Gandhi was disqualified, he was evicted from his house, and now the Supreme Court has given him a sag of relief, and opposition parties, Congress Party, India Bloc parties are making sure that the message goes across to people that look, Rahul Gandhi is back in the parliament and he is there going to join the proceedings. All attempts were made by the Bharatiya Janata Party to make sure that Rahul Gandhi stays away from the parliament. But after the judgment from the Supreme Court, Rahul Gandhi is back in the parliament. So this is the message that the India Bloc parties want to give, and in particular Congress Party, and that is why all these preparations were being done. We had seen earlier in the day as to how sweets were distributed inside Mallikarjun Kharge's office right after the Lok Sabha notifications, the Lok Sabha Secretariat notification reinstating Rahul Gandhi as member of parliament had come. You had elated Adhir Ranjan Chaudhary offering sweets to Mallikarjun Kharge. Many of the Congress MPs literally holding bags of sweets inside the parliament complex. And now, the moment Rahul Gandhi had entered the parliament complex, there was a celebration of sorts, not only from the Congress Party MPs, but also by other MPs from the India Bloc Party. So clearly, opposition parties banding together to send across a message that, look, injustice was done, and that has been reversed, and Rahul Gandhi is here back in the parliament, and
very interesting developments would unfold tomorrow, Nabila. Remember, the no confidence motion that you were referring to is to happen tomorrow. And Rahul Gandhi is expected to speak during the no confidence motion. That is what we are learning from our sources. And if he speaks, we have to be prepared for a massive firework on the floor of the House in Lok Sabha as well, where you could, all you could expect is Rahul Gandhi once again training guns at the Bharatiya Janata Party, at the central government. Well, there's also a lot of the BJP is often taking jibes at Rahul Gandhi that he's barely present in the parliament. But now with his reinstatement as an MP, do you think this time around could be slightly different? Have you had a word on that with the Congress netas? Is Rahul Gandhi going to be a lot more regular? Are we going to hear fiery speeches from him in the parliament this time? The strategy, or at least the timing, falls correct as far as the Congress party and the opposition bloc is concerned. You know, what more the opposition parties could have asked for, or the Congress in particular could have asked for. On one side, you have the Delhi Services Bill being brought in the Parliament, in the upper house of the Parliament today, and on that very day, Rahul Gandhi was reinstated, and tomorrow there's going to be a no confidence motion being moved, which has been moved by Gaurav Gogoi of the Congress party itself, and in that moment you would want your most popular leader to be in the floor of the House and to make that speech. But the question about his regularity, whether he'll be participating in the more of the proceedings or not, is something that the Congress party will have to respond now. But be sure that the last 4 days of this monsoon session, the Congress party and Rahul Gandhi would want to exploit as much as possible to send across a public message, because remember, he has been away from the proceedings because of the disqualification. Now you have the most popular leader of the Congress party, Rahul Gandhi, coming back in the House. He will be speaking as member of the Parliament. So the Congress party, Rahul Gandhi himself, as well as the India bloc parties, would want to get maximum out of that opportunity. Remember, after the monsoon session, the House will be reconvened normally in the winter session. So there's a long gap between that, and then you will also have the elections in several of the state assemblies, including the Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh. So what we would expect around that time is that possibly Rahul Gandhi will be busy with the election campaigning, as would be the other leaders from the Congress party, and even from the Bharatiya Janata Party for that matter. But rightly so, that question that you asked, whether he'll be regular in the proceedings or not, that is to be seen. But as far as the monsoon session is concerned, there are hardly 4 to 5 days that is left, because the House is expected to go Sandai on 11th of this month, and there's a possibility that after Prime Minister's speech is expected on the 10th of this month. So there are hardly 4 to 5 days left in the monsoon session. But absolutely, there's barely been fruitful proceedings in the Parliament. We've just more often than not seen sloganeering, chaos with the opposition alliance partners there sticking to their stance on discussing Manipur with the Prime Minister being in the House. But that hasn't happened. On the contrary, you have the BJP insisting that MPs must discuss, opposition must discuss the atrocities against women in Rajasthan, which is a Congress-ruled state. So this logjam has continued. Nothing fruitful has come in both houses of the Parliament. Rahul Gandhi, like you said, is likely to speak tomorrow. Any word that we have on what exactly he's going to be raising in his first speech after being back? Well, Nabila, the no confidence motion that was moved by the India bloc MPs, and rather in particular Gaurav Gogoi of the Congress party, was done because the India bloc parties wanted Prime Minister Narendra Modi to come to the floor of the House and speak on issue of Manipur. The way our northeastern state is in complete turmoil since May. And because the opposition parties failed to get Prime Ministers to speak on the floor of the House, the strategy that was employed in both houses, whether it be the Lok Sabha or the Rajya Sabha, in Lok Sabha you had a different strategy, in Rajya Sabha you had a different strategy. So the best strategy that could have been employed by the opposition bloc was that to move a no confidence motion, which would mean that the government will have to come to the floor of the House, and there was a higher possibility of the Prime Minister speaking on after the no confidence motion.
motion, and that is what was aimed at, has been achieved by the opposition parties in terms of House proceedings. On 8th and 9th, you will have discussion on no confidence motion. On 10th, Prime Minister is expected to speak after the no confidence motion, after the voting process is over. In that manner, the speech that we are talking about, or the address that we are talking about, the opposition parties, the Congress MPs, and if at all Rahul Gandhi speaks tomorrow office, there's a high likelihood. Speech could be focused majorly on Manipur and other policy matters through which Mr. Gandhi could target the government over its policy issues. So that is pretty clear. Manipur is going to remain the top focus for the India bloc parties, for the Congress party, and possibly also for Rahul Gandhi tomorrow. Back to you. That said, as we see the kind of celebration for Rahul Gandhi in the parliament, it's also a very important day for the Aam Aadmi Party, as the Delhi Services Bill is going to be introduced in the Rajya Sabha. Rajya Sabha has been adjourned until 2 p.m. Once it resumes, it's going to be a real litmus test to see if at all the India alliance, the opposition alliance partners, are truly on one page or not, because that's only the place where they could defeat the BJP in numbers. Right, Nabila, that is the litmus test that India bloc MPs or India bloc parties are facing right now. We know that numbers are at odds. 121 is the number that the NDA plus YSRCP and BJD looks like right now. And the opposition bloc is expected to have 104, 105 votes in its favor, with India bloc MPs on one side and the BRS also coming in support of the Aam Aadmi Party. We know for a matter of fact that several parties, including the Congress Party, the Aam Aadmi Party, the BRS, JDU, in fact, all of these parties have already issued 3-line whip to ensure that all its members are on the floor of the House. In a very interesting turn of events for that matter, the JDU's whip also applies on the deputy leader of the upper house, Mr. Harivansh, because he's after all MP from the Janata Dal United. A whip has been issued. All the India bloc parties would want that attendance is 100%. In a very interesting development today, Nabila, what we are also expecting is leaders such as stalwarts such as Shibu Soren, who is former Chief Minister of Jharkhand and President of Jharkhand Mukti Morcha. He could come to the House as well for the proceedings, despite the fact that he hasn't been keeping well. And similar messages or expectations have been kept for former Prime Minister Manmohan Singh as well. So there's a possibility that Mr. Manmohan Singh could come to the House proceedings during the Delhi Services Bill. At least that's what is the expectation of the Aam Aadmi Party as well. So there's a lot of optics at play as well. As we speak, we know that there's been chaos within the parliament, and Amit, do stay with us. We have some big news coming in with the BJP now accusing the Congress party of having some links with China when it comes to funding to Rajiv Gandhi Trust. A big allegation surfacing. BJP now accusing the Congress party in the parliament, accusing the Congress itself to have links with China, raking up the Chinese funds issue for Rajiv Gandhi Trust. After New York Times exposed China propaganda funding, BJP now says probe the Congress-China links. Listen in. जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2008 में जब ओलंपिक हुआ, ये कांग्रेस को, ये सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था, उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे। चाइनीज के माध्यम से देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जितनी भी फंडिंग हुई है कांग्रेस के, जितनी भी चाइना ने फंडिंग की है, जांच की जाए और इतने लोग हैं उनको सलाखों पर पीछे डाला जाए और कांग्रेस पार्टी को किया जाए। Right.
There you have Nishikant Dubey of the BJP claiming the Congress has links with China. And this is what the BJP has been raising time and again. Issue of Chinese donations to the Congress party. As we see in the latest, Nishikant Dubey, the House raises questions as to why Chinese funding came to Rajiv Gandhi Trust. In fact, the BJP has not missed an opportunity to raise this question. And this time, yet again, Nishikant Dubey making that point on the floor of the House, as you have the opposition trying hard to corner the government on issues like Manipur and wanting a debate on the matter. Here you have the BJP now raising questions on the country's security in the first place, country's integrity, claiming that the Congress is the one who has been having links with Chinese. In fact, accusing Congress of taking donations from China towards Rajiv Gandhi Trust. Let me cut across to Shehzad Poonawala joining us on the phone line. Shehzad, the reason to why this issue has been raked up in the parliament today? You see, राहुल की दुकान में चाइनीज सामान ही मिलता है. We thought it was not just the red diary. Today there's the red agenda of Congress which has been exposed, and by whom? By New York Times, the paper that they consider as gospel. The New York Times has given a clear-cut account of how Neville Roy Singham and his news clique are dangerous tools of the Communist Party of China and how they are promoting China's political agenda across the world. And this is the same organization when in 2021 Indian agencies acted on them. It was the Congress and its entire ecosystem that came out in its defense. Whether it was Randeep Surjewala or the stalwart leaders of Congress who defended NewsClick, saying that these are only journalists trying to do their job. And today, it is the same Congress party which has a standing MOU with the Chinese, the same Congress party which has received funding from Chinese into RGF, which is using this kind of propaganda platforms of the Chinese to destabilize India. Therefore, the Congress party must explain to us what is it that their agenda is. Isn't it true that they have linkages with this news clique? Isn't it true that they were defending news clique? Isn't it true that they've received funding from the Chinese? Isn't it true that at every opportunity they have played a role of the Chinese propaganda machinery, whether it's Galwan, whether it's Doklam, whether it's questioning the Indian Armed Forces? Isn't it true that the Congress party, while it was in power, also played to the Chinese agenda, whether it's on the territorial front or on the financial front, and caused huge harm to the interests of India? And therefore, today the relevant question should be asked of the Congress कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या राहुल की दुकान में केवल चीनी सामान मिलता है? You know, but in that case, is this the debate that y'all are looking forward to? The BJP wants a debate on this, wants answers from the Congress right at a time when you're discussing Manipur. Is this the conversation that you want to have on the floor? First of all, Nabila, if the Congress was so serious about Manipur, they would not have stalled Parliament for 9 days and then allowed it to discuss the Delhi Services Bill. So I think the sanctimonious stands aside, the Congress should answer whether they are even serious about Manipur. As far as this issue is concerned, don't you think it's a little troubling that the Chinese are funding so-called organizations to destabilize India, to undermine India? The Congress party is defending them. There is an agency that is probing on this. The Congress party defends this organization. And even the New York Times, the Congress party hails, has now called out this agenda of the Chinese through NewsClick. And not a single question should be asked of the Congress. Are they above any kind of questioning? Absolutely not. The timing of which is the question. But why don't you elaborate for us a little on the funding that we're speaking of? In fact, just last year, Amit Shah as well had raked up the same issue, saying that about 1.3 crores was given by China to Rajiv Gandhi Trust. Would you know a little more on that? Look, it is clear and evident that there is a web of Chinese propaganda that has been created and is being funded by this gentleman called Mr. Neville Singham, who is running all of these organizations, is funding them using Chinese money and Chinese agenda. And the elements who are in India supporting this are connected to the Congress party. The Congress party and its entire ecosystem came out in defense.
when the Enforcement Directorate started some kind of proceedings against NewsClick, saying that this was an assault on the free press. Apart from that, the Chinese have on record given money to the Rajiv Gandhi Foundation. The FCRA of Rajiv Gandhi Foundation has also been cancelled subsequently. We have also seen that there is a standing MOU between the Chinese and Rahul Gandhi, which they do not disclose the contents of even today. We have seen the manner in which between 2004 to 14, the Chinese were allowed to get several advantages over India, and the UPA government did nothing except to facilitate the Chinese point of view. And therefore, the question today is that whether it's Doklam, whether it's Galwan, whether it is this issue, is there a Chinese propaganda wing that operates within the Congress party? And who is funding this? Who is the one that is behind this? And why is it that the Congress party is tying up with elements antithetical to Indian interests only because it wants to score a political brownie point? This should be answered by Congress party and by Rahul Gandhi in particular. All right. Thank you, Shehzad, for joining us on that. I'm going to cut across to BJP's Nishikant Dubey, who on the floor of the House raised this very question, asking what are the links between the Congress and China? As much as the opposition now trying to corner the centre on issues of Manipur, here you have the BJP raising questions based on a New York Times report asking why doesn't the Congress admit that they received indeed funding from China into the Rajiv Gandhi Trust? जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2008 में जब ओलंपिक हुआ, ये कांग्रेस को, ये सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था, उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे। चाइनीज के माध्यम से देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जितनी भी फंडिंग हुई है कांग्रेस को, जितनी भी चाइना ने फंडिंग की है, जांच की जाए और जितने लोग हैं उनको सलाखों के पीछे डाला जाए और कांग्रेस पार्टी को किया जाए। All right, slipping into a short break, coming up on the other side, taking you through all the action on the India bloc, getting ready for the battle in Rajya Sabha. Two tests for the opposition alliance as the Delhi Services Bill is going to be introduced, ailing ex-Jharkhand Chief Minister Shibu Soren also to vote. Stay with us. Meet the men Monu Manesar and Bittu Bajrangi who inflamed Mewar, who triggered the fiery chain reaction. आपके वीडियोस ने जो है वो उकसाने का काम करा है इस यात्रा में। कोई उकसाने का कार्य नहीं किया, ना मैं उस यात्रा में गया। The key faces of the new nightmare, live streamed provocations and poison. आधे घंटे की प्लानिंग नहीं है, ये कह रहे हैं कि बिट्टू ने बोल दिया, मैंने बोल दिया, वो इसको लोग तैयार बैठे थे वो बंदूक लेके। Cops hunt them, but we find them. Listen as they paint the full scary picture. Only on India Today Television. Days after riots and violence engulfed the state of Haryana, bulldozer action continues in Nuh. The Haryana administration razed down several establishments in violent hit Nuh. Meanwhile, over 600 shanties were demolished under CM Khattar's anti-encroachment drive in the Nuh district. Also, Section 144 was imposed in the district in order to restore the law and order situation. So far, 104 FIRs have been registered. About 216 have been arrested so far in the July 31st violence. As per sources, 8 of the accused who instigated the violence are from the state of Rajasthan. Meanwhile, VHP leader Surendra Jain said the yatra is not over yet. Yatra will resume this month. While probe is still underway, Haryana Home Minister Anil Vij has claimed that no violence was pre-planned. देखो जी, फिलहाल तो यही टारगेट है, उसके बाद प्लान आउट करते हैं, जैसे भी प्लान आउट होता है उसके अपडेट कर दिया जाएगा। मालिक कौन है? मालिक जो भी हो जी, इसका अवैध निर्माण है और इसके जो है नोटिस प्रॉपर दे दिए जा चुके हैं। नोटिस बहुत पहले दिए जा सकते हैं। लोकल प्रशासन का फेल्योर ये 100% था और इसीलिए आज मजबूर होकर हरियाणा के गृह मंत्री को कहना पड़ा कि मुझे 3 बजे के बाद मालूम चला और वो भी मेरे मित्र ने बताया, क्योंकि मैं अंदर घिरा हुआ लोगों को बचा रहा हूं, मैंने ही उनको फोन किया
और तेज चलना चाहिए, और केवल चलना नहीं चाहिए, स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। और स्थायी व्यवस्था यही है कि मुस्लिम बहुल इलाके के अंदर सीआरपीएफ और बीएसएफ का स्थायी केंद्र बने। वहां के समाज ने आश्वासन दिया है कि हम बची हुई यात्रा पूरी करेंगे, वहां की खापों ने कहा है। इसलिए जब वो आह्वान करेंगे हम उस यात्रा में शामिल होंगे और इस यात्रा को पूरा करेंगे। Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Karnataka Minister Dinesh Gundu Rao has stirred a controversy, putting the India alliance in a tough spot. Dinesh Gundu Rao called Aam Aadmi Party's Mohalla Clinic overhyped after visiting Panchsheel Mohalla Clinic in Delhi city. Meanwhile, AAP claims the Karnataka minister changed his stance after receiving a phone call. Here's more. The opposition India alliance is in a spot. War of words erupt between the Aam Aadmi Party and the Congress over Mohalla clinics in Delhi. It started with a guided tour of Mohalla clinic given to Karnataka Minister Dinesh Gundu Rao, shared widely on social media by AAP leaders. But Dinesh Gundu Rao later called Arvind Kejriwal government's Mohalla clinics overhyped and disappointing. It was not like the way it was hyped up to be. So in that way it was a disappointment. It was not like the way it was hyped up to be as a model for the whole country. I think there are better models in many other states also. And even in Karnataka also we've got our own good model. Now Congress leader Sandeep Dixit has slammed Arvind Kejriwal's governance. जब कभी बड़ा अलायंस होता है तो उसमें ऐसे सब भी हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है भाई, जंगल में जहाँ शेर रहते हैं, हाथी रहते हैं, वहाँ गीदड़ भी रहते हैं। गीदड़ से भी नहीं करेंगे यार, गीदड़ बेचारे में भी बहुत बढ़िया क्वालिटीज होती हैं, वो भी प्राकृतिक होता है, उसका भी प्रकृति में कोई योगदान होता है। Meanwhile, the Bharatiya Janata Party did not miss out on the opportunity to take a dig at the Kejriwal government. These two parties that cannot see eye to eye have only come together not because they have any mission or vision. It is only because they want to save their corruption, their commission, their politics of division and their obsession and ambition for position. AAP claims Dinesh Gundu Rao changed his position on Mohalla clinics under pressure from some quarters. दिनेश राव जी बहुत तारीफ कर रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक देख रहे थे, अखबार वाले साथ में थे, मीडिया साथ में। अचानक एक फोन आया, किसका आया तो वो बता सकता है, और उनकी भाषा बदल गई। The open fight between the Congress and Aam Aadmi Party has come as an embarrassment for the newly forged opposition alliance, India. Will the two parties be able to bury their differences ahead of elections? Bureau Report, India Today. Welcome back. Here's some big news coming in on fire breaking out at Delhi's AIIMS. 6 fire tenders have been rushed to the spot. All patients have been evacuated from AIIMS. The fire at Delhi's AIIMS endoscopy room at the second floor of AIIMS building.
And this is the smoke billowing from the AIIMS building, a massive sprawling AIIMS complex. The second floor in the endoscopy room, fire has broken out. Kumar Kunal is on the spot, bringing us a lot more on that. Kumar, please give us if at all patients inside the AIIMS building are safe. Have they been evacuated? What's led to the fire? Kumar Kunal. We seem to have a patchy connection there. We're going to try and patch him back, but some scary visuals coming in right from AIIMS building. The fire is broken out at the second floor of the AIIMS complex. 6 fire tenders right now trying to douse that fire, but you see smoke emanating from that building. Second floor, the endoscopy room. Endoscopy room is where the fire broke out, and the reason for it is yet to be established, but patients for now, we believe, have been evacuated from the AIIMS. Kumar Kunal, go on. Tell us what's the reason for the fire. Any injuries? Hopefully, we believe that patients have been evacuated from there. See, Nabila, I can show you the live pictures directly from the AIIMS, and although what we are learning from our sources that the fire is under control now, different firefighters are still working to douse whatever the things are there. I can show you the fire service vehicles, they are at work, the fire brigade vehicles are at work, and what we have gathered information from our sources that fire is under control now. It has started from the second floor, which is endoscopy department, and which is just nearby the emergency department. Both of the departments are on the same floor, and when the fire broke in the building, it was quite crowded, as today is Monday, the first day of week. Hence, several of the patients and their those who are coming along with the patients, they were actually at this building, and hence I can show you that are a few more fire tenders are brought to the service. I can show you the main gate has been opened. I am taking you through the live pictures that at least 8 fire tenders are already inside the building. Now 2 more fire tenders have brought to the work. So it is significant because what we have been told by the fire department and the AIIMS administration that fire is under control. So if the fire has been doused, then why 2 additional fire tenders have been brought? That is a big question. But now what actually we are getting, we have shown through the pictures that these fire tenders have been brought inside the AIIMS campus, and still, although we can't see the fire from any of the windows or any of the facets, but still fire tenders are coming, and almost all the patients, all those who were present at that moment inside the building on the second floor, they have been rescued. More fire tenders are now coming and rushing towards the building. 2 more fire tenders are coming inside the building. So this is the situation right now. I can show you the live pictures which are coming directly from the most important, the biggest hospital in the country, which is All India Institute of Medical Sciences. So this is the situation, and firefighters as well fire tenders are continuously rushing to douse the fire. So there were obviously information that fire was controlled, but now the situation is not under. What is the situation? Well, we believe that the fire has broken out near the emergency ward of AIIMS. You see that thick ball of smoke emanating from the building, the AIIMS Institute, where several patients were present. They've been evacuated. Thankfully, no injuries have been reported, at least no casualties as of now. It could be very well that the hospital management there are rushing many of those patients out. For now, we know that most of them are
have been evacuated. Atul Garg on the phone line with us, the officer, chief fire officer. Mr. Garg, tell us what do you think has caused this fire and are people safe? Is it an empty space now? See, the fire occurred around 12 o'clock. We rushed around 14 fire tenders. Fire is under control right now, and we are, searching the whole the premises. We cannot say whether anybody is trapped or not, but that we'll let you know a little bit later. Now, for now, would we know what was the reason for the fire, and is it coming under control, or is this fire going out of hand? Images that we see here on television shows a thick ball of smoke and fire still ablaze. Fire is under control, absolutely under control. And cause of the fire is too early to tell what is the cause of fire. We are doing search operation to see if anybody is trapped there. Right, sir. Would you know if there's an emergency exit and if the building is compliant with the fire safety norms? See, in general, AIIMS has been, meeting all the requirements, but let us see whether system was working in this building or not. That is later on. Not right now. My priority right now is rescue the people if somebody is there. Okay, but for now, you're saying the fire is fully under control and people have been evacuated from there. So searches are on to see if anyone's trapped. Right. Search operation is continuing. We are seeing with this door to door, room to room, whether anybody is there or not. Fire is under control, absolutely under control. All right. Thank you, Atul Garg, for joining us. Chief Fire Officer Atul Garg says the fire is now under control. It's been brought under control. 11:54 a.m. That's roughly about 45 minutes ago when the fire tenders were alerted of this fire that broke out in the endoscopic room, very close to the emergency room of AIIMS, following which 6 fire tenders were rushed to the spot. In fact, Atul Garg tells us there are nearly 14 teams who are doing everything they can to bring this fire under control. Search operations across the AIIMS complex underway to see if there's anyone trapped. For now, people are safe. Kumar Kunal joins us more. Kumar, here we know that AIIMS is quite a busy area, even on that road that leads up to AIIMS. Tell us a little more on the ease with which fire tenders are able to reach the spot and do their duty. Is it true that fire has finally come under control? Happening at the AIIMS is still not quite known, because earlier what we have been told by the AIIMS administration and even the fire service officials that fire is under control. But seemingly it is not right now, because several of the fire officers are at work and even fire tenders are rushing to the building. So this is clearly indicating that fire is still not under the control, and although everyone is not quite upfront about the situation, none of the officials are actually briefing that what the situation, in how many rooms fire is still not under control, if anyone of the patients are still inside those rooms where the fire have broke out. These things are still not known, and hence it is not, although the claims made by the AIIMS administration and the fire service officials, they are claiming that situation is under control, but it is not from any of the officials which is coming from, because some of the officials who came to the main gate, we actually tried to ask them that what the situation inside, so they are non-committal about the situation. But the way more fire tenders are coming inside the AIIMS building, that is clearly indicating that still fire is not completely doused, and it will take some time to completely take the situation under control. So this is the situation right now. I will try to show some of the pictures that how fire tenders are still working, and still more fire tenders are being brought to the work. Meanwhile, all those who were present inside the premises, inside the building, they have been evacuated. No one is being allowed to go inside. Neither media personnel are being allowed. So situation is such that we are at the main gate, and inside
what's happening, it is actually still not very much known, although they are claiming that situation is under control, but nothing concrete and nothing, no senior officials are coming here to brief us about the situation right here. So we can just we're at the moment, of course, hoping that everything's under control, as assured by Atul Garg, who is the chief fire officer who spoke to us. Kumar Kunal, thank you very much for joining us. He's been tracking those developments, and we're going to bring to you, if at all things are under control in just moments from now, we'll have better clarity. For now, we hear that people have been evacuated. Those patients have been moved out of the building. Search is on to see if anyone's stranded, but for now, no casualties reported. Fire under control. All right, cutting across to new violence, just days after the entire state of Haryana was engulfed in communal clashes. In the New district, where the clashes really broke out, bulldozers were completely razing down many of those constructions, which the civic body accused of being illegal. And after much outrage and petitions before the High Court, now you have the Punjab and Haryana High Court asking for officials to stop razing down illegal construction. In fact, demolition of this demolition drive itself in the name of illegal encroachments was carried on in Nu. It continued for the 4th day straight. Started, in fact, on Sunday, it was already 4 days that these shanties, according to officers there, were illegal. A bunch of houses were broken down. Bulldozers razed it down. A curfew in Nu now has been lifted, though, for 4 hours on Sunday. In an attempt to restore some kind of normalcy, the curfew was relaxed in Nu even today. So about roughly 4 to 5 hours, curfew is relaxed so that people can move about doing their business. As far as investigation is concerned, Haryana police has now intensified probe. Police is in touch with Rajasthan government. This comes just after the state police on Saturday arrested 8 accused who are from Rajasthan. Taking a dig at the district's law and order situation, the Congress has now alleged lack of security during the Jal Abhishek Yatra. नूह से लेकर सोहना तक में जितनी भी हिंसा हुई, वो सब कुछ प्री प्लान थी। एक साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया था। हरियाणा पुलिस ने राजस्थान से 8 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि वो साजिश के तहत हरियाणा की सीमा में दाखिल हुए थे। उन्हें मालूम था कि शोभा यात्रा निकलने वाली है और इसी के तहत वो दाखिल हुए थे और उन्होंने जमकर हिंसा फैलाई थी। इसके अलावा पाकिस्तानी यूट्यूबर के वीडियो में लगातार भड़काऊ कंटेंट थे, उस पर एसपी ने भी ये खुलासा किया है कि इस तरह के वीडियो लगातार पाकिस्तान से जारी किए जा रहे थे, जिस पर हरियाणा पुलिस की नजर बनी हुई है। कैमरामैन अंकित के साथ अरविंद ओझा, नू। जब ये यात्रा हुई तो उसके पहले ये सुना है कि कोई 2, 4, 5 बड़े खतरनाक और बड़े सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने वाले वीडियो सर्कुलेट हुए, कहा जाता है, जिस कारण से वहाँ उपद्रव हुआ। तो जब आपको मालूम है कि इस तरीके के वीडियो सर्कुलेट होंगे तो स्थानीय स्तर पर टेंशन तो हो सकती है। तो ये तो मैं नहीं मान सकता कि पुलिस वाले भी उसी समाज में रहते हैं, वहीं रहते हैं, उनके पास ये वीडियोस नहीं आए होंगे। धार्मिक कोई जगह एक ऐसी जगह से जा रहा है जो संवेदनशील है या जहाँ कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ आपको पुख्ता इंतजाम करना चाहिए था। अब तक 56 FIR रजिस्टर हो गया डिस्ट्रिक्ट नो में और 147 लोगों को हमने अरेस्ट कर दिया। इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है, 4 टीम्स को बनाया। इन्वेस्टिगेशन तेजी गति में प्रोग्रेस चल रहा है। अभी टेक्निकल एविडेंस में जोड़ा जाएगा और इन्वेस्टिगेशन वगैरह आगे बढ़ता जाएगा, सब कुछ खुलासा हो जाएगा। All right, now reacting to violence and riots that broke out in Haryana's Nu, Brahm Yadav, a Gurugram councillor, has said that Hindus should not give Muslims houses on rent and that the landlords should check the Aadhaar cards of their tenants before renting out their homes. In fact, he's also added that one should boycott shops run by Muslims. मेरा निवेदन ये है भाई कि इन किराएदारों को मत दो, मीट मच्छी की दुकान जैसे तिगरा में घुसे हम भाई, ऐसे मुसलमानों को मत दे, भूखे रह लेंगे, लेकिन इनका पैसा हमारा पैसा इनके पास जाता है, इनसे हमले। तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है सभी ग्रामीण वासियों से, जो यहाँ गुड़गांव के कोई भी आए हो,
जैसे मैं कातीपुर से आया हूँ भाई, मैं भी अपने गांव वालों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के सबके आधार कार्ड देखो, जो मुसलमान हो उसको अपना मकान, कोई भी जमीन मत दो। और जो हमारे हिंदू भाई है, वाल्मीकि है, कोई भी है भाई, वो मीट की दुकान हिंदू भाई करे, बाहर से आके मुसलमान यहाँ कमाते हैं और फिर वही हमारे ऊपर गोलियां चलाते हैं। All right, that was a brazen statement by the BJP councillor in full public glare. Slipping into a short break on that note, coming up on the other side, Assam set to bring ban polygamy law. Hemanta Biswa pledges empowerment for women. Opposition calls the move as communal and diversionary. Stay with us. Very few people in the country have access to the Couture Week, and hence through our medium we're going to get you what really happened at the Couture Week. Let's first begin with the opening showcase of Falguni and Shane Peacock. Let's bring you a roundup of the beautiful showcase by Tarun Tahiliani and a gorgeous one while added by JJ Valaya as well. Here's a look. Designer Tarun Tahiliani presented his latest masterpiece capsule, For Eternity, at India Couture Week. With For Eternity, Tarun paid homage to the timeless allure of traditional craftsmanship and art. India's, as we've discussed before, a fashion tradition. This is a new Western interpretation where we are blending our craft with the Western idea of changing fashion and a modern fit and size-specific fit. It's taken me a long time to navigate myself back through a very organic but real process of what makes me feel better. You know, I grew up, I thought Studio 54 was the last word. Falguni and Shane Peacock's show had a strong social commentary. They shattered the glass ceiling with model Victor in a lehenga. So anyone now calling the lehenga bridal should now think twice, as inclusivity is the order of the day. Falguni and Shane Peacock opened the Couture Week and had Kiara Advani as the showstopper. This year we wanted to do a lot of layering. If you noticed, we had a kurta and then we had a short jacket and we had a veil and we had dupattas. We just wanted to make it really dramatic and I think also we wanted to reinvent the Indian bridal scene actually. The modern bride wants to wear a jacket, they want to wear short jackets, they want to look cool. I guess inspiration that comes behind every garment, a lot of detailing, it just makes it look so elegant and yet so glamorous. The House of Valaya by JJ Valaya celebrate the couture season in its new collection, Baroda. It was a marriage of craft and opulence that unfolded through three All right, now in the latest move, the Assam government is mulling over prohibiting polygamy in the state of Assam. Chief Minister Hemanta Biswa Sarma has said that a law to ban the practice of a man marrying multiple women will be brought this year in the Assam Assembly. As per High Court judge-led expert committee, the Assam government can proceed to enact a law prohibiting polygamy in the state. Going by the report submitted by the committee to Chief Minister Biswa Sarma, the state of Assam has the legislative competence to enact a law to end polygamy. This is what the government says. The Chief Minister has added that the law, however, will have to be cleared by the President of India instead of the Governor. Meanwhile, opposition has now slammed the decision of the government, calling this decision itself as diversionary and a communal act, especially at a time when suggestions are being brought in on UCC by the Law Commission. আইন কৰাৰ অধিকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ আছে নে নাই সেই সাবজেক্টৰ ওপৰতে আমি কমিটিখন বনাই দিছিলোঁ আজি কমিটিখনে আমাক সৰ্বসন্মতিক্ৰমে ৰায় দিছে যে পলিগমিৰ ওপৰত আইন কৰাৰ অধিকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ আছে খালি তাত যেটো ফাইনাল সিগনেচাৰ যেটো এসেন্ট বুলি কয় হেতু ৰাজ্যপালৰ পৰা নহয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা ল'ব লাগিব
Whether we'll do it in September or December or January, that is to be decided. But within this financial year, this law will definitely come. 4 बार हम लोग बैठा है एक कमेटी बैठने का बाद एक हम लोग रिपोर्ट हम लोग प्रिपेयर किया है और रिपोर्ट प्रिपेयर करके आज हम लोग का रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में हम लोग चीफ मिनिस्टर का हाथ में दे दिया। अभी बाकी गवर्नमेंट का ड्यूटी गवर्नमेंट करेगा। पोलीगमी का ऊपर क्या करना है क्या करना नहीं तो ये सब गवर्नमेंट करेगा। Our agenda was to basically see whether there was legislative competence for the state to enact a law, given the fact that polygamy, and particularly for Muslims, is also governed by the Sharia Act of 1937, which is a central law. So it was keeping this in mind that the committee sat and finally submitted its report and has generally pointed out that the state has the legislative competence to do so, subject to the doctrine of repugnancy under Article 254, which means it requires the presidential assent. Would this apply only with regard to the Sharia Act, as in the repugnancy with regard to the Sharia Act, or would the polygamy ban also apply to tribal practices, etc.? In fact, in the report, we have considered that very briefly, because this was specific to the Sharia Act. We've also pointed out that the tribals have a protection under the Hindu Marriage Act of 55. So polygamy, in a sense, or marriage laws, there's been codification of it. Hindu Marriage Act was 55, the Christian Marriage Act is 1872, the Parsi Marriage Act is 1936, and the Sharia Act is 1937. So with regard to that, we've pointed it out and said that this is something also that during the legislative process could be considered. All right, you could log on to indiatoday.in. You could also download our app for a lot more on that. Stay with us. On the other side, Rahul Gandhi's Lok Sabha membership has been restored after Lok Sabha Secretariat issues a notice. He is now reinstated as an MP back in the Parliament. Stay. You saw the clothes, you saw the celebrities, you saw the jewelry. Time now for you to see footwear fashion and how to keep it dramatic this season. Here's a look. When it comes to footwear, a lot of drama is now making way. For instance, Freddie Mercury makes a comeback with Theatre XYZ heels. Harrison, Dark Horse, and this is the Theatre XYZ one. My favorite pick from their drama collection. It's got the boss-like appeal to it as well. Even the Harrison Cloud9 from the collection is now gender fluid and mainstream. Not just that, boots for all weather are here and they look chic. I'm a sucker for color this monsoon, and the monsoon footwear these days are coming in different colors and different patterns. I'm just loving every bit of it. Right from bubblegum smelling sandals to jelly shoes in all shapes and sizes and colors, monsoon shoes are sure having a moment. And if you have the courage to wear something different, try out these jelly ones from Melissa that are available in every color for different moods. And if you are the classy, safe type, your footwear can still have a lot of drama. These picks from OCD, especially the tap dancing Rebeccas or the dramatic Julies, come in with elegance in its own dramatic twist. It's a beautiful artisanal work of craftsmanship made by artisans of India. And just look at the kind of drama it is adding to my foot. While this season is all about adding drama, remember, wearing a story on your feet is all the 2023 footwear fashion is all about. In New Delhi, Chaiti Narula for India Today. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
A very good afternoon. You're watching India Today. I'm Nabila Jamal. Rahul Gandhi is now finally back as an MP in the Parliament. I'm going to take you through the images of the Lok Sabha, Rajya Sabha, the headlines first. Rahul's Lok Sabha membership finally restored after Lok Sabha Secretariat issued a notice. Grand welcome there by the India Alliance MPs for Rahul Gandhi's reinstatement. BJP alleges China link in Congress in the Parliament. BJP rakes up alleged Chinese funding for Rajiv Gandhi Trust after New York Times exposed China propaganda funding. BJP says the probe BJP asking now for a probe on Congress's China links. India bloc readies for Rajya Sabha battle. Opposition to pull out all stops on Delhi services bill, ailing ex-Jharkhand Chief Minister Shibu Soren to vote. Furious BSP MP, BJP MLC verbal spat on stage. Danish Ali stops the BJP MLC's Bharat Mata chant on stage. BJP Neta Vijay Vargiya threatens, says can kill anti-Bharat brigade. Fire breaks out at Delhi's AIIMS endoscopy room near the emergency ward. All patients evacuated. Fire tenders have managed to bring the fire under control. All right, cutting across to Prime Minister Narendra Modi, who is right now participating in the 9th National Handloom Day celebration. Let's cut across to the live इस सेक्टर में आए हैं, ये पैसा कहां पहुंचा है? ये पैसा मेरे हथकरघा सेक्टर से जुड़े गरीब भाई बहनों के पास गया है। ये पैसा गांवों में गया है, ये पैसा आदिवासियों के पास गया है। और आज जब नीति आयोग कहता है ना कि पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग भारत में गरीबी से बाहर निकले हैं, वो बाहर निकालने के काम में इसने भी अपनी भूमिका अदा की है। आज वोकल फॉर लोकल की भावना के साथ देशवासी स्वदेशी उत्पादों को हाथों हाथ खरीद रहे हैं। ये एक जन आंदोलन बन गया है। और मैं सभी देशवासियों से एक बार फिर कहूंगा, आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है, गणेश उत्सव आ रहा है, दशहरा, दीपावली, दुर्गा पूजा, इन पर्वों पर हमें अपने स्वदेशी के संकल्प को दोहराना ही है। और ऐसा करके हम अपने जो हस्तशिल्पी हैं, अपने बुनकर भाई बहन हैं, हथकरघा की दुनिया से जुड़े लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी मदद करते हैं। और जब राखी के त्योहार में, रक्षा के उस पर्व में मेरी बहन जो मुझे राखी बांधती है, तो मैं तो रक्षा की बात करता हूं, लेकिन मैं अगर उसको उपहार में किसी गरीब मां से हाथ से बनी हुई चीज देता हूं, तो उस मां की रक्षा भी मैं करता हूं। साथियों, मुझे इस बात का संतोष है कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो योजनाएं हमने चलाई हैं, वो सामाजिक न्याय का भी बड़ा माध्यम बन रही है। आज देश भर के गांवों और कस्बों में लाखों लोग हथकरघे के काम से जुड़े हैं। इनमें ज्यादातर लोग दलित, पिछड़े, पसमानदा और आदिवासी समाज से आते हैं। बीते 9 वर्षों में सरकार के प्रयासों ने न सिर्फ इन्हें बड़ी संख्या में रोजगार दिया है, बल्कि
इनकी आय भी बढ़ी है। बिजली, पानी, गैस कनेक्शन, स्वच्छ भारत जैसे अभियानों का भी लाभ सबसे ज्यादा वहां पहुंचा है। और मोदी ने उन्हें गारंटी दी है मुफ्त राशन की। और जब मोदी गारंटी देता है तो उसका चूल्हा 365 दिन जलता ही जलता है। मोदी ने उन्हें गारंटी दी है पक्के घर की। मोदी ने इन्हें गारंटी दी है 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की। हमने मूल सुविधाओं के लिए अपने बुनकर भाइयों और बहनों को दशकों का इंतजार खत्म किया है। साथियों, सरकार का प्रयास है कि टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी जो परंपराएं हैं वे ना सिर्फ जिंदा रहे बल्कि नए अवतार में दुनिया को आकर्षित करें। इसलिए हम इस काम से जुड़े साथियों को और उनकी पढ़ाई, प्रशिक्षण और कमाई पर बल दे रहे हैं। हम बुनकरों और हस्तशिल्पियों के बच्चों की आकांक्षा को उड़ान देना चाहते हैं। बुनकरों को बच्चों को स्किल ट्रेनिंग के लिए उन्हें टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट्स में 2 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल रही है। पिछले 9 वर्षों में 600 से अधिक हैंडलूम क्लस्टर विकसित किए गए हैं। इनमें भी हजारों बुनकरों की ट्रेनिंग दी गई है। हमारी लगातार कोशिश है कि बुनकरों का काम आसान हो, उत्पादकता अधिक हो, क्वालिटी बेहतर हो, डिजाइन नित्य नूतन हो। इसलिए उन्हें कंप्यूटर से चलने वाली पंचिंग मशीनें भी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे नए नए डिजाइन तेजी से बनाए जा सकते हैं। मोटर से चलने वाली मशीनों से ताना बनाना भी आसान हो रहा है। ऐसे अनेक उपकरण, ऐसी अनेक मशीनें बुनकरों को उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार हथकरघा बुनकरों को रियायती दरों पर कच्चा माल यानी धागा भी दे रही है। कच्चे माल को लाने का खर्च भी सरकार वहन करती है। मुद्रा योजना के माध्यम से भी बुनकरों को बिना गारंटी का ऋण मिलना संभव हुआ है। साथियों, मैंने गुजरात में रहते हुए बरसों मेरे बुनकर साथियों के साथ समय बिताया है। आज मैं जहां से सांसद हूं, काशी, उस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी हैंडलूम का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी अक्सर उनसे मुलाकात भी होती है, बातचीत होती है, इसलिए मुझे धरती की जानकारी भी रहती है। हमारे बुनकर समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है कि वो प्रोडक्ट तो बना लेता है, लेकिन उसे बेचने के लिए उन्हें सप्लाई चेन की दिक्कत आती है, मार्केटिंग की दिक्कत आती है। हमारी सरकार उन्हें इस समस्या से भी बाहर निकाल रही है। सरकार हाथ से बने उत्पादों की मार्केटिंग भी जोर दे रही है। देश के किसी न किसी कोने में हर रोज एक मार्केटिंग एग्जीबिशन लगाई जा रही है। भारत मंडपम की तरह ही देश के अनेक शहरों में प्रदर्शनी स्थल आज निर्माण किए जा रहे हैं। इसमें दैनिक भत्ते के साथ ही निःशुल्क स्टॉल भी मुहैया कराया जाता है। और आज खुशी की बात है कि हमारी नई पीढ़ी के जो नौजवान हैं,
जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, स्टार्टअप की दुनिया के लोग भी, मेरे होनहार भारत के युवा, हथकरघा से बनी चीजें, हस्तशिल्प से बनी चीजें, हमारे कॉटेज इंडस्ट्री से बनी चीजें, उसके लिए अनेक नई नई टेक्निक, नई नई पैटर्न्स, उसके मार्केटिंग की नई नई व्यवस्थाएं, अनेक स्टार्टअप्स आजकल इस दुनिया में आए हैं और इसलिए मैं उसके भविष्य को एक नयापन मिलता हुआ देख रहा हूं। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत हर जिले में वहां के खास उत्पादों को प्रमोट किया जा रहा है। देश के रेलवे स्टेशनों पर भी ऐसे उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष स्टॉल बनाए जा रहे हैं। हर जिले के, हर राज्य के हस्तशिल्प, हथकरघे से बनी चीजों को प्रमोट करने के लिए सरकार एकता मॉल भी बनवा रही है। एकता मॉल में उस राज्य के हस्तकला उत्पाद एक छत के नीचे होंगे। इसका भी बहुत बड़ा फायदा हमारे हैंडलूम सेक्टर से जुड़े भाई बहनों को होगा। आप में से किसी को अगर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने का अवसर मिला होगा तो वहां एक एकता मॉल बना हुआ है। हिंदुस्तान के हस्तशिल्पियों द्वारा बनी हुई देश के हर कोने की चीज वहां उपलब्ध होती है। तो टूरिस्ट वहां जो आता है तो एकता का अनुभव भी करता है और उसको हिंदुस्तान के जिस कोने की चीज चाहिए वहां से मिल जाती है। ऐसे एकता मॉल देश की सभी राजधानियों में बने, इस दिशा में एक प्रयास चल रहा है। हमारी इन चीजों का महात्म्य कितना है। मैं प्रधानमंत्री कार्यकाल में विदेश जाता हूं तो दुनिया के महानुभावों के लिए कुछ न कुछ भेंट सौगात ले जाना होता है। मेरा बड़ा आग्रह रहता है कि आप सब साथी जो बनाते हैं उन्हीं चीजों को मैं दुनिया के लोगों को देता हूं, उनको प्रसन्न तो करते ही हैं। जब उनको मैं बताता हूं कि मेरे फलाने इलाके के फलाने गांव के लोगों ने बनाई है तो वो बहुत प्रभावित भी हो जाते हैं। साथियों, हमारे हैंडलूम सेक्टर के भाई बहनों को डिजिटल इंडिया का भी लाभ मिले, इसका भी पूरा प्रयास है। आप जानते हैं सरकार ने खरीद बिक्री के लिए एक पोर्टल बनाया है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी जेम, GEM। जेम पर छोटे से छोटा कारीगर, शिल्पी, बुनकर अपना सामान सीधे सरकार को बेच सकता है। बहुत बड़ी संख्या में बुनकरों ने इसका लाभ उठाया है। आज हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़ी 2.25 लाख संस्थाएं जेम पोर्टल से जुड़ी हुई है। साथियों, हमारी सरकार अपने बुनकरों को दुनिया का बड़ा बाजार उपलब्ध कराने पर भी स्पष्ट रणनीति के साथ काम कर रही है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के MSMEs, हमारे बुनकरों, कारीगरों, किसानों के उत्पादों को दुनिया भर के बाजारों तक ले जाने के लिए आगे आ रही है। मेरी ऐसी अनेक कंपनियों के नेतृत्व से सीधी चर्चा हुई है। दुनिया भर में इनके बड़े बड़े स्टोर से, रिटेल सप्लाई चेन है, बड़े बड़े मॉल्स हैं, दुकानें हैं। ऑनलाइन की दुनिया में भी इनका सामर्थ्य बहुत बड़ा है। ऐसी कंपनियों ने अब भारत के स्थानीय उत्पादों को विदेश के कोने कोने में ले जाने का संकल्प लिया है। हमारे मिलेट्स, जिसको हम अब श्री अन्न के रूप में पहचानते हैं, ये श्री अन्न हो, हमारे हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हो,
अब ये बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां उन्हें दुनिया भर के बाजारों में लेके जाएगी. All right, now cutting across to some news coming in as the BJP has targeted the Congress over New York Times investigative report that's prompted the BJP to accuse the Congress of having links with China. The New York Times investigation, their investigative report that was released today, speaks of how Chinese government had actively peddled propaganda across the world, including India. And that echoed in the parliament today as the BJP demanded answers from the Congress, levelling serious allegations against the Gandhi family of having links to Beijing. BJP's Nishikant Dubey raked up the issue of funding towards Rajiv Gandhi Trust from China. He spoke about this in the parliament, demanding a detailed investigation. Interestingly, Union Minister Anurag Thakur also lashed out at the Congress, accusing them of attempting to shield news from websites NewsClick when they were raided for alleged China links back in 2017. So what exactly was the New York Times report? Well, their detailed investigation has claimed that US billionaire Neville Roy Singham, he's linked to multiple network outlets across the world and has financed their Chinese propaganda on behalf of the Chinese government. The report claims that in India, news website NewsClick was also financed by Singham to write propaganda pieces masked as independent content in favor of China. आज बड़ा एक सीरियस मामला मैं उठाना चाहता हूं अध्यक्ष जी. कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को यह मानते हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है. और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है. और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है. पुरकायस्त उसका मालिक है. उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं, उसके बारे में सर. दूसरा, मैं इस सरकार से मांग करता हूं सर कि जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया. All right, well, we hear Nishikant Dubey of the BJP raising the issue in the parliament. While we've seen the monsoon session of the parliament has been a near washout, except for the Delhi Services Bill being passed in the Lok Sabha. Now, the start of this week, the Lok Sabha echoed with allegations of the Congress party being funded by China. In fact, the allegation here is that funding came through Chinese embassy into Rajiv Gandhi Trust. The BJP netas asking for the Congress leaders to admit that fact. Let me cut across to Amit Bhardwaj, who's joining us live from the parliament. Amit, while the opposition collectively are hoping to have a discussion on Manipur with Prime Minister Modi in the House for it, here you have the BJP now picking on exactly what they've been saying for the last 2 years. And it appears that New York Times report has given them a fresh narrative at this point, which speaks of Chinese propaganda and money coming into the Rajiv Gandhi Trust, which is why Rahul Gandhi allegedly held secret meetings with the Chinese. These are allegations that have been mounting. It appears that the New York Times report is really a nail on that coffin. Well, Nabila, this has given fresh ammo to the Treasury benches, the Bharatiya Janata Party MPs. For the past 2 years, we have been, time and again, we have heard several BJP MPs, several press conferences at the BJP headquarters where they have tried to link the China funding with the Congress party via Rajiv Gandhi Foundation. And now you have a New York Times report, questioning the entire funding and the propaganda machinery being run, allegedly being run by one individual, Mr. Neville Roy Singham. And the allegation in the NYT report is that Mr. Singham was also funding this news website NewsClick,
And the BJP's link in this particular regard is that the same news click which was raided by the Enforcement Directorate, at that point in time, the Congress party and several people from the left ecosystem, from the left liberal ecosystem had come together and had criticized the government for the ED action on news click. And via this commonness or commonality, what they are saying that, see, on one hand you have NewsClick being raided by the Enforcement Directorate. The Congress comes at front and defends NewsClick. On the other side, you also have the same Congress party which had received allegedly funding from the for the Rajiv Gandhi Foundation from Chinese establishment. So this is the reason the Congress party must be questioned on this issue. But the allegations which are coming from the Treasury benches, or rather the Bharatiya Janata Party MPs in this case, is not there's nothing new. Yes, the NYT report is providing them fresh ammo to target the Congress party as well as Rahul Gandhi in this particular regard. And it is the timing of it is quite interesting, Nabila. At the very moment when Rahul Gandhi entered the Parliament complex after him being reinstated as MP in the Lok Sabha, that is the time when Nishikant Dubey from the BJP inside the house, inside Lok Sabha, raised this issue about the NYT report, saying that these people referring to the opposition parties keep on talking about the NYT report. Yeah. And here is another NYT report which speaks about as to how Chinese propaganda was being run by this particular website NewsClick, and they are trying to connect those dots between the and of course the BJP are demanding answers. Well, Amit, stay with us. Shehzad Poonawalla of the BJP joining us. Let's have a listen. राहुल की दुकान में चाइनीज सामान ही मिलता है. We thought it was not just the red diary. Today there's a red agenda of Congress which has been exposed, and by whom? By New York Times, the paper that they consider as gospel. The New York Times has given a clear-cut account of how Neville Roy Singham and his NewsClick are dangerous tools of the Communist Party of China, and how they are promoting China's political agenda across the world. And this is the same organization when in 2021 Indian agencies acted on them. It was the Congress and its entire ecosystem that came out in its defense, whether it was Randeep Surjewala or the stalwart leaders of Congress who defended NewsClick, saying that these are only journalists trying to do their job. And today, it is the same Congress party which has a standing MOU with the Chinese, the same Congress party which has received funding from Chinese into RGF, which is using this kind of propaganda platforms of the Chinese to destabilize India. Therefore, the Congress party must explain to us what is it that their agenda is. All right, I'm going to cut across to Tom Wadakan, who is the national spokesperson for the BJP. Mr. Wadakan, here amid discussions being attempted to both sides wanting to have a discussion on Manipur, it appears that now has become a secondary issue. The BJP raising issues of Chinese funding towards Rajiv Gandhi Trust, accusing the Congress of cozying up to Chinese when there was an infiltration bid over the last few years. Tell us more on this. Jamila, the fact of the matter is there is a MOU signed by the Congress party, which remains a mystery till date. And then there is this New York Times report about a certain portal and how money was transferred for propaganda for Chinese. And they have also been part of the ecosystem supporting the Congress party. So all this needs an explanation when I would call it an enemy country like China is using our media to expand its base in India. We have sensitive borders with them. Many of the Manipur issues which we said has gone into the background, no, it's not gone into the background. It is a lot of weapons coming in from China via Burma, which is a soft border. Now, these are issues that need explanation. And if the Congress party doesn't give a reply to this, then, well, we will take this to the logical end through discussions in Parliament to the streets of the country and raise issues. Because what is a political party doing meddling around with funds coming in from China? You know,
At a time like this, we haven't heard a concrete response denying the same from the Congress. And this is not as if this is the first time the BJP is bringing this on the floor of the House. 2020 was the first that the BJP had raised the issue. And so far, no satisfactory answers have come from the Congress's end. Has an investigation rolled out with this regard? Well, the logical issues will take its own course. I mean, NIA raids were there on that portal, and there have been leading what you call smoking gun evidences to establish links. Investigation is in progress. It's a work in progress. But the Congress party, which claims to be secular and what have you, should explain what is this connect. I mean, how many times have they connected with China? And then you have this dinners at the Chinese embassy at crucial times. Information to the Congress party comes from the Chinese embassy. This needs explanation. All right. Well, Mr. Ambadkar, thank you very much for joining us. We hear the BJP now raising this very question in the parliament as well. Nishikant Dubey of the BJP questioning the Congress and asking them to admit that they indeed received funding from China into Rajiv Gandhi Trust. What was the need for it? What was the amount taken? And this was precisely around the time when Chinese was trying to infiltrate to the Indian borders. And at a time like that, the Congress was allegedly cozying up with the Chinese. I'm going to cut across to give you a quick breakdown to what exactly the New York Times investigation exposes. Starting with the orchestrated international propaganda toolkit by China, it clearly suggests that China was trying very hard across the globe to push their propaganda, positive propaganda for the country. And then we have the investigative report there suggesting that Indian website called NewsClick had links to the Chinese government, and they had put out a lot of articles that spoke well of China or highly of China while along the time they were trying to infiltrate into Indian borders. Now, number 3 is the Indian website that was funded for propaganda pieces. That's precisely what I mentioned, as China was using this website to push positive propaganda for their country. Now, US billionaire Singham's role in this funding propaganda, Indian-born US billionaire, we believe, has been the man behind funding this entire propaganda act. Now, propaganda was disguised as independent content, which is all the more something that has been closely looked into and detailed in the New York Times report, that most of that content was made to look as if it was independent content that was being put out and that had no malice, but clearly it was propaganda. Amit Bharadwaj, who is still at the parliament, joins us live for more on that. Amit, now it seems like the whole narrative from Manipur has switched to Rahul, and also now that Rahul Gandhi has come back to the parliament, it appears the entire narrative has now switched towards Congress party receiving funding from Beijing. Tell us a little more. Has the Congress reacted at all? We know both houses will resume at 2 p.m. Well, Nabila, you know, what was expected today is that when Rahul Gandhi comes to the Parliament complex and when he is in Lok Sabha, the Congress would again up the ante as far as the Manipur issue is concerned, and maybe further its demand that the Prime Minister should come to the floor of the House and speak on this issue. It was again a shot in the arm for the opposition parties, for the India bloc parties, as well as the Congress party in particular. But what happened the moment when Rahul Gandhi stepped inside the house, inside the Parliament complex, at that point in time, you had Nishikant Dubey from the Bharatiya Janata Party rising in the House and raking up this issue, raising this issue about the Chinese propaganda machinery, as to how this Mr. Singham had funded the website NewsClick, which was pushing, as being reported in NYT, was pushing the Chinese propaganda in India. And there was an attempt made by BJP MP Nishikant Dubey
to connect the dots between NewsClick, Mr. Singham, Congress Party, Rajiv Gandhi Foundation, to raise the question as to what is the MOU that was signed between the Congress Party and the China. But so far, we are yet to get that response from the Congress Party. Maybe they'll stick to the old narrative and stance that they had taken in the past. Back to you, Nabila. Now, tell us a little more on the year when this controversy escalated. We know BJP raised this in 2020, but what was the year that and Rajiv Gandhi Trust was set up in the 90s? So, during which period is the investigation suggesting that there was money pumped into the Rajiv Gandhi Trust for Chinese propaganda in India? Are we looking at the last decade or before that? All right, stay with us. I'm going to cut across to Udit Raj, the Congress leader joining us on the phone line. Mr. Udit Raj, give us your understanding on the New York Times investigative report that suggests that there was Chinese propaganda that was carried out, money was being pumped into India, and Rajiv Gandhi Trust was the one who received that money to sort of put out propaganda content while at a time when Chinese was trying to infiltrate into Indian borders. BJP raising this in the parliament, demanding answers. See what happened. PM Care Fund also received the Chinese money. And not only that, Vinod Adani, brother of Adani, is a partner of Chinese person. What about that? And Prime Minister explained it that hasn't he received the fund in PM Care Fund from Chinese corporate houses? That is also to be discussed. Let us discuss all together. Why this only? Isolated, make it isolated case. Let all such matters to be discussed. Those who have been funded from China, Chinese forces. And what the Prime Minister said that time that we will boycott Chinese and ban this TikTok, etc. And afterwards, business transaction increased and many other relations have increased. And so far, the BJP has not in position to explain that how much money they have got from the Chinese companies. No, but is it true that money was received by the Rajiv Gandhi Trust? Because the BJP claims an MOU was signed in 2008 and therefore there was a lot of money exchange that happened in the years subsequently. So are you admitting that this indeed happened? Will you ask it from the BJP that how could they receive money in PM Care Fund? How can you define? See what happened when Congress received, suppose if Congress received, I don't know still, but it's very obvious that the PM Care Fund has received the money from Chinese sources, Chinese companies. Explain that also. If that is wrong, then that is also wrong. Otherwise, you should not question, and I don't think they have a moral ground to raise the question in the parliament. All right. I don't have moral. All right, Udit Raj, thank you very much for joining us. But clearly here, the Congress has taken serious objection to what was said by Nishikant Dubey of the BJP. Leader of Congress in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chaudhary, has now shot a letter to Lok Sabha Speaker Om Birla regarding the BJP MP Nishikant Dubey's comments that he made in the Lok Sabha today, precisely on the Congress allegedly receiving funding from China. Adhir Ranjan Chaudhary in that letter has written, and I quote, "We demand under Rule 380 that his remarks be expunged in full and that an inquiry be conducted into how such allegations was permitted to be made and was raised on record." Cutting across to the BJP, who is holding a press conference on the same. लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। भारत कैसे कमजोर हो, कैसे भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और कैसे भारत विरोधी एजेंडे को कैसे हवा, खाद, पानी दिया जाए, ये सब चिंता से जुड़े लोग करते हैं और इसमें दिन रात लगे रहते हैं। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन, अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन,
न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस, चाइना, न्यूज क्लिक अ पार्ट ऑफ अ umbilical cord। और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। एक एजेंडा था, एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन, ये लोग चलाते थे। और इनके यहां सारा सामान चीनी है और चीन को सम्मान है। और जब मैं न्यूज क्लिक की बात करता हूं तो चीन के द्वारा संपोषित ग्लोबल मीडिया संस्थान जिसके द्वारा ये फंडिंग हुई है, न्यूज क्लिक की अगर मैं बात करूं इसकी फंडिंग की भी, तो जब भारत में इसके खिलाफ जो इसके रेड हुई और वो रेड 5 दिन तक चली, उसमें कहां से पैसा लिया गया, कितने पैसे आए, वो सब जानकारियां भी मैं आपको देने वाला हूं कि क्या क्या उस समय हुआ। उस समय भी प्रश्न उठे थे कि आखिरकार ये फंडिंग एकदम से कैसे और कहां से आई। अगर आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो विदेशी नेविल रॉय सिंघम, ये सिंघम कोई सिंघम फिल्म की बात नहीं कर रहा मैं, ये नेविल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की। और फंडिंग उसको कहां से आई नेविल रॉय सिंघम को? चाइना पीछे से करता है। और इसमें नेविल रॉय का जो सीधा संपर्क है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक प्रोपेगेंडा आर्म के साथ है, जो चाइनीज मीडिया कंपनी माकू ग्रुप के साथ। ऐसा किसने कहा? जिसके ऊपर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बड़ी बड़ी बातें जिन अखबारों के बारे में करते, उन्होंने ही पुष्टि की है। पुष्टि उस बात की जो भारत ने 2 साल पहले कह दिया था। हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है। और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आए थे। उस समय उनके किन किन लोगों ने ट्वीट किए, ये कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट हैं। 1, 2, तीसरा, ये खुलकर उनके साथ थे, ये चौथा। और फिर कांग्रेस आई तो कम्युनिस्ट पार्टी तो जब चाइना का समर्थन करना और उनके लोगों का एजेंडा, तो ये एक और साथ में है। फिर बाकी तृणमूल कांग्रेस कैसे पीछे रहती, वो भी साथ में आ गई, बड़े बड़े पत्रकारों से लेके बाकी सबके नाम। और ये कहते थे कि भारत सरकार फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मैं इस पे भी आऊंगा। मित्रों, ये जो इसकी फंडिंग है, उसके साथ साथ मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं, फंडिंग तो एक कर रहे थे न्यूज क्लिक को चाइनीज कंपनियां नेविल रॉय सिंघम के माध्यम से, लेकिन जो इनके सेल्समैन थे हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग हो गए थे। जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए और जो चाइना के नैरेटिव को बनाने के लिए ये लोग साथ में जुड़कर खड़े हो गए। भारत के भोले भाले लोगों को भ्रमित किया गया दुष्प्रचार के माध्यम से और एक झूठा प्रोपेगेंडा। ये फ्री न्यूज के नाम पे फेक न्यूज परोसने वाले हैं और इनका समर्थन करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने वाली कांग्रेस पार्टी और अन्य दल ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर इनके साथ जुड़ गए। अब ये जो न्यूज क्लिक को जो पैसा आया, ये रूट भी कहां कहां से हुआ। ये गौतम नवलखा का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भी एक आरोपी है। किस केस में? एल्गार परिषद के माओइस्ट लिंक में जो
भीमा कोरेगांव केस है, उसमें अभी तक जेल में ये अंडर हाउस अरेस्ट है, यूएपीए लगा हुआ है इनके ऊपर। और यही नहीं, न्यूज क्लिक को शुरू होने के कुछ महीनों के बाद भी करोड़ों रुपए दिए गए, और इन करोड़ों रुपए जब मिले तो उसमें से 1.5 करोड़ रुपया एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया। अरे 1.5 करोड़ रुपए एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया, तब तो कांग्रेस और बाकी दलों ने, राहुल गांधी जी ने, किसी ने सवाल खड़े नहीं किए। और यही नहीं, ये लॉस मेकिंग कंपनी का शेयर बढ़ चढ़कर दामों में खरीदा गया, आर्टिफिशियली एनहांस्ड प्रीमियम उस पर मिला। लॉस मेकिंग कंपनी के शेयरों पर जब आर्टिफिशियली एनहांस्ड प्रीमियम मिलता है, बढ़ा चढ़कर पैसा मिलता है, उस पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं करते, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों के शेयरों पर ये सवाल खड़ा करते हैं। जब भारत इसी कंपनी के ऊपर कार्रवाई करता है तब तो उस पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ये चीनी गंध की बदबू जब दुनिया भर में फैलती है और जो अमेरिका का एक अखबार इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट निकालता है तो दिखाता है कि ये फॉरेन मीडिया ने कैसे एक्सपोज किया है न्यूज क्लिक को, और चाइना के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का हाथ भी इसमें कैसे उसका सहयोग समर्थन करने में है। और ये फॉरेन प्रेस के प्रोपेगेंडा और एजेंडा पर हम भारत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे, चाहे कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़ी हो जाए। राहुल गांधी जी बीच रात को जाकर उनके साथ खड़े हो गए, बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपने आप में शामिल भी करा लिया, और इनके समय तो सीबीआई और ईडी पिंजरे में बंद तोता होती थी, लेकिन आज अगर वो ईडी कार्रवाई न्यूज क्लिक जैसी फर्जी संस्थाओं के खिलाफ करती है तो उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये गलत सूचना के खिलाफ, मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ युद्ध है, और ये युद्ध जारी रहना चाहिए। भारत सरकार की एजेंसियों ने अगर कदम उठाए हैं तो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले जो चाइना का एजेंडा लेकर दुनिया भर में नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने भी बात कही है, तो उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया एजेंडा नहीं चलेगा। आडवाणी जी ने एक बार बहुत पहले पार्लियामेंट में कहा था कि जब देश के खिलाफ कोई खड़ा होता है तो उसमें हम सबको इकट्ठे होकर आना चाहिए। और उन्होंने तो यह भी कहा था कि किस तरह से कौरव और पांडव भी एकजुट हो गए थे जब तीसरा कोई सामने आकर खड़ा हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य देश का यह है कि कांग्रेस ने विदेशी लोगों के साथ हाथ मिलाने का प्रयास किया। और यही नहीं, जब इनको निमंत्रण मिला सोनिया जी को, राहुल जी को, कब मिला? जब ओलंपिक्स खेल हुए तो कांग्रेस पार्टी को भी, गांधी परिवार को भी वहां पर न्योता दिया गया, और ये लोग उस समय चाइना भी गए, खेल देखने गए थे, खेल करके आ गए, वहां पर एक एग्रीमेंट साइन करके आ गए जहां पर हाई लेवल एक्सचेंज होना था दो पार्टियों के बीच में। अब पता नहीं किस तरह का हाई लेवल एक्सचेंज होना था, ये तो 2017 में हमको जुलाई में देखने को मिला, जब डोकलाम में अतिक्रमण करने का प्रयास उस समय चीन की सेना ने किया तो हमारे सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब उनको दिया। लेकिन राहुल गांधी जी उस समय चीन के अधिकारियों के साथ, डिप्लोमेट के साथ हाथ भी मिला रहे थे, खाना भी खा रहे थे, ना जाने क्या रणनीति और क्या क्या एक्सचेंज कर रहे थे। ये इससे पता चलता है कि जो 2008 में इनको एग्रीमेंट हो गया था, उस समय एक पेमेंट भी की गई थी। पेमेंट किसको की गई? पेमेंट की गई थी राजीव गांधी फाउंडेशन को। और ये राजीव गांधी फाउंडेशन को जो पेमेंट की गई 2005-7 के बीच में, ये किस लिए की गई? और ये उस समय की गई जब सोनिया गांधी जी यूपीए की, और वही यूपीए सरकार जिसके ऊपर लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी हैं। वो नैरेटिव के लड़ने के लिए क्या इनको चाइना के लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा, या चाइना के समर्थक ऐसी एजेंसियों का सहयोग लेना पड़ेगा जो एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन चलाते हैं, उनका सहयोग लेना पड़ेगा? और ये नेशनल एनएसी की जो चेयरपर्सन थी, जो यूपीए में कहूंगा उस समय सोनिया गांधी जी, तो क्या ये पैसा और ये पार्टी उस समय से ही इस काम में लगी है?
और ये एग्रीमेंट भी साइन किसी और ने नहीं किया, चाइना के वाइस प्रेसिडेंट उस समय के, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर, सीपीसी पॉलिट ब्यूरो के शी जिनपिंग और उनके कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी जी के बीच में हुआ। आखिरकार इस एग्रीमेंट में क्या लिखा है? ये 2017 में भी देखने को मिला कि राहुल गांधी जी देश के साथ तो खड़े नहीं हुए, लेकिन उस समय उनके अधिकारियों के साथ रहे। इसका अगला उदाहरण आपको देखने को मिलता है जब कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल में मार्च 2023 में राहुल गांधी जी ने बड़े बढ़ा चढ़ाकर चाइना की प्रेज भी की, फोर्स ऑफ नेचर कहा, एस्पायरिंग सुपर पावर कहा। भारत की तो बढ़ाई नहीं कर पाए, भारत का अपमान ही करते रहे और डेमोक्रेसी इन इंडिया इज अंडर अटैक कहते रहे, लेकिन चाइना का समर्थन करते रहे। और ये जो हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उससे गुजरने वाली वन बेल्ट वन रोड, इसको लेकर भी चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर उनके जिस तरह से वो गुणगान करते रहे, ये अपने आप में दिखाता है कि ये एक ही गर्भ नाल के तीनों हिस्सा हैं। कांग्रेस, चीन और न्यूज क्लिक क्यों ना हो, ये एक बार नहीं कई बार देखने को मिला। और एक और कड़ी इसमें अगले उनके दौरे पे जुड़ जाती है जब इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने, जिनके ऊपर आप देखेंगे राहुल गांधी जी के अमेरिका दौरे में साथ साथ रहे, सहयोगी रहे, आयोजन में रहे, और इनके खिलाफ त्रिपुरा सरकार ने मुकदमा भी किया कि जिस तरह से फेक न्यूज फैलाने का काम किया गया। और ये आईएमसी वही है जो न्यूज क्लिक के समर्थन में उस समय भी आए थे। चोर चोर मुसेरे भाई कहां कहां इकट्ठे होते हैं, ये आप सबके सामने नजर आया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जर्नलिस्ट हों, प्रेस गिल्ड से हों, या कोई अपने अवार्ड वापसी गैंग हो, ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं समय समय पर एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन को लेकर, उस एजेंडा को लेकर। और न्यूज क्लिक भी उसमें एक कैसी अहम भूमिका निभा रही थी। और ये कांग्रेस बैक्ड, या फिर मैं कहूं जो कम्युनिस्ट पार्टी बैक्ड भी, जो पैसे उनको अलग अलग रूट से आए हैं न्यूज क्लिक को या बाकी ऐसी कंपनियों को, जो पेड मीडिया हाउसेज जो झूठा नैरेटिव खड़ा करती हैं और झूठी खबर फैलाने में ये शातिर हैं। ये तो इतने शातिर हैं कि एक टेररिस्ट को भी एक एक्टिविस्ट बना देते हैं। ये टेररिस्ट को भी एक्टिविस्ट बना देते हैं। और ये न्यूज क्लिक जो चलाई जाती किसी और के द्वारा नहीं, पुरकास्था द्वारा चलाई जाती है, जो पीपी के न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड है। इसको पैसा भी किस किस से प्राप्त हुआ, वो अगर आप मनी ट्रेल भी देखेंगे जो सामने नजर आता है, तो स्पष्ट तौर पे दिखता है कि ये जो नेविल रॉय सिंघम है, इन्होंने ही यहां पर 27 करोड़ 51 लाख रुपया न्यूज क्लिक में दिया, जो आगे जाकर इसमें से गौतम नवलखा को भी 20,53,000 रुपए गए हैं। और एक बप्पादित्य सिन्हा जो आईटी सेल मेंबर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, 82 लाख रुपया उनको भी गया है। तो कम्युनिस्ट भी कैसे कांग्रेस से पीछे रहेंगे, सब ने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिया है। तो न्यूज क्लिक के पीछे खेल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी जो हमारे हिंदुस्तान की है, उनका सबका ये खेल इसमें दिखता है कि कैसे भारत विरोधी एजेंडा चलाना है और कैसे एक के बाद दूसरा पैसा इनको दिया गया। और बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट को इसमें से पैसा गया, मैं उसके नाम लेने में नहीं जाऊंगा, वो इतने बड़े भी नहीं जिनको इतना बड़ा बना दिया गया है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये शुरू तो की गई थी चाइना का नैरेटिव खड़ा करने के लिए दुनिया भर के कॉन्टिनेंट्स में, लेकिन किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इसको साथ में ले लिया भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए। क्या कांग्रेस इतनी गिर गई है और कुछ दल इनके समर्थन में न्यूज क्लिक के इतना गिर गए थे कि वो सत्ता पाने के लिए इतना गिर जाएंगे कि न्यूज क्लिक के समर्थन में आके पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई थी, इनके साथी खड़े हो गए थे, एक घमंडिया गठबंधन के लोग इसका एक हिस्सा बने रहे। और केवल यही नहीं, मैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी कैसे पीछे रहते, आखिरकार वो तो चल के ही एनजीओ चलाकर आए थे, वो तो बात करते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ वाली। आज उनकी पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में घिरी हुई है, डूबी हुई है, मंत्री जेल में पड़े हुए हैं। तो क्या श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी
इनके जिस एनजीओ में ये पार्टनर हैं, हिस्सेदार हैं, क्या उनके माध्यम से भी न्यूज क्लिक की कोई फंडिंग हुई है? क्या देश को बताना चाहेंगे? तो चाइना का पैसा भारत विरोध में एक न्यूज क्लिक के माध्यम से लगे और उसमें कांग्रेस से लेकर बाकी दल भी साथ में जुड़ जाएं, तो ये अपने आप में दिखता है कि कैसे ये न्यूज क्लिक कांग्रेस, कम्युनिस्ट, चाइना न्यूज क्या कर रहे हैं वो आपको दिख ही रहा है। मैं बात पे आपको अंत में इतना ही कहूंगा कि ये सारे ट्वीट्स जो मैंने आपको दिखाए, आज मेरा उन लोगों से कहना है कि आप जो धुआं ही धुआं है, कुछ ना हुआ है। आपने धुआं तो बहुत फैलाने का काम किया, भारत के खिलाफ एजेंडा फैलाने का काम किया, न्यूज क्लिक के समर्थन में खड़े हुए, विदेशी एजेंसियों, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर सत्ता में आने के लिए देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हुए। आपने एजेंडा भी वहां पे चलाया, लेकिन आज जब एक विदेशी मीडिया हाउस ने उस प्रोपेगेंडा और एजेंडा को पूरी विश्व के सामने खोलकर रखा है, तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप देश को, राहुल गांधी जी, जवाब दोगे कि ये 2005-7 में जो राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया वो कहां कहां खर्च हुआ? जो हाई लेवल आपने मीटिंगें करनी थी वो क्या चाइना के साथ हुई? क्या न्यूज क्लिक एक उसका हिस्सा है? क्या कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं? और मेरा सवाल समस्त घमंडिया गठबंधन, ये विपक्ष के लोगों से है कि क्या आपने भी समय समय पर इस माध्यम से पैसा जो कहीं ना कहीं से आया, आप लोगों ने भी इसका इस्तेमाल किया है? और ये एंटी इंडिया सिंगम जो नेवल रॉय सिंगम हैं, वो जो भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, फैक्ट चेकर के नाम पे या चाइनीज चेकर इन मीडिया फ्रीडम के नाम पर, ये भारत में एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने के लिए आए हैं। और मैं तो कांग्रेस के बारे में अंत में इतना ही कहूंगा, फ्रॉम 1962 to 2022-2023, Congress has not changed a bit. The physical and intellectual space of India has been yet again handed by Congress to China on a platter. सोरोस से सिंगम, चाइना से कांग्रेस पार्टी तक, ये सब अलायंस पार्टनर दिखते हैं भारत के खिलाफ एंटी इंडिया एजेंडा, ब्रेक इंडिया एजेंडा को लेते हुए। एक समय था महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया चलाया था, ये एंटी इंडिया और ब्रेक इंडिया एजेंडा चला रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? श्रीमान राहुल गांधी जी, देश को जवाब दें। देश पूछना चाहता है आखिर आपके हाथ इन सब के साथ कैसे जुड़े हैं, और कांग्रेस के हाथ और कहां कहां इन एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। मेरा निवेदन है माननीय राजीव चंद्रशेखर जी से कि आपको संबोधित करें। माननीय राजीव जी। I will be very brief. My friend and colleague Anurag Bhai has laid out in extensive detail the threat represented by misinformation and how some countries are actively fanning misinformation in our country with the help of some news platforms in India and with the help of and to help some political parties in India. I want to quickly share with you, this is neither a new revelation nor is it something that is happening for the first time. A couple of years ago, over 1,000 accounts on social media had to be removed when they were identified as ISI, Pakistan's ISI PR linked, who were fanning misinformation and violence in India. Then a few months ago, there were another 1,000 plus accounts that were removed that were being sponsored by and operated by Khalistani elements, again fanning misinformation and violence and lies and hatred against the government of India and our leadership.
This new revelation further reinforces the threat that our country, our democratic society, our open media faces when a group of people and vested interests get together, invest in platforms, and these groups operate in remarkable coordination. They cross-post, they share each other's content, they share a remarkably common, consistent goal, lies and hatred about our Honorable Prime Minister, lies and hatred about the government, fanning communal disharmony and incitement. We have seen this in Manipur recently. We have seen this in the farmers' agitation. There is a remarkable convergence of strategy. And they fan a consistent narrative. And ironically, as Anurag Bhai said, there is one political leader who is consistent with this narrative. These narratives that are put out by platforms like NewsClick and other platforms that are operating in concert are echoed almost blandly in a similar fashion by this political leader Rahul Gandhi, who goes abroad and says exactly the same things. Democracy is under danger, the judiciary is compromised, the EVMs are compromised, which is exactly the narrative that these platforms put out. I don't want to say any more excepting to say this is neither simple nor is it some innocent activity. This is a complex conspiracy. This is a network of operators being funded, being fanned by vested interests outside the country who are opposed to India's rise, opposed to India's confidence in the global community of nations, opposed to a growing economy and growing presence in the global value chains across the board in manufacturing and innovation. Misinformation is a real danger to our democracy. And every time, as again Anurag Bhai said, there is an attempt to rein in misinformation, these platforms jump along with their friends and rally behind this false cover of free speech. The right to free speech as guaranteed in our constitution is certainly not and must not and should not be a cover for misinformation directed at our nation's rise. And therefore, this revelation that a foreign country is actively funding platforms that are launching and have launched and continue to launch vitriol against our government, our country, our society, our religion, our faith, is something that all of us should be very aware of, and we should all get together and have a consensus on how to fight misinformation in the coming years and coming days. Thank you. प्रश्न सादर आमंत्रित है। सुजीत ठाकुर, दैनिक भास्कर। आरोप लगाया है, मेरा सवाल ये है कि क्या ये आप भाजपा की तरफ से सिर्फ आरोप लगा देंगे, आप सरकार देखिए, जो दुष्प्रचार या झूठी खबर के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन जो दुनिया भर के लिए एक बड़ी चुनौती बनी है और जिसको लेके रिपोर्ट एक विदेशी अखबार ने आप सबके सामने दी, और जब भारत की एजेंसियों ने उसके ऊपर कार्रवाई की थी, तब तो यहीं के कई पत्रकारों ने, कई मीडिया हाउसेस ने, कई विपक्ष के नेताओं ने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि सच ना तब छिपा था ना आज छिप रहा है। ये एजेंडा जो विदेशी है, ये देश के सामने भी आया है, अब दुनिया के सामने भी आया है। लेकिन एक बात तो खुलकर सामने आ गई कि राहुल गांधी जी की विदेश की या देश की स्क्रिप्ट कहां से लिखकर आती है, ये तो अब पता चल ही गया होगा गर्भनाल का हिस्सा कौन कौन है। जहां तक कार्रवाई की बात है, वो कार्रवाई अलग अलग
जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी कार्रवाई कर भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि घमंडिया गठबंधन के नेता इस पर अपना स्पष्टीकरण अब देंगे, क्या जवाब देंगे? जो कल इनके समर्थन में आकर खड़े हुए थे, आज उनके ऊपर एक गंभीर आरोप है कि देश विरोधी ताकतों के साथ ये खड़े हैं, सत्ता में आने के लिए किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार खड़े हैं, और ये पैसे के द्वारा चलाया गया फेक नैरेटिव, फेक न्यूज एक टेररिस्ट को भी एक एक्टिविस्ट बना देता है, तो क्या उसका हिस्सा ये भी बनते चले जा रहे हैं? पूर्णिमा जोशी देखिए, वो जो एजेंसीज है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। समय समय पर जब वो कार्रवाई पूरी होती है उसके बाद वो अगले कदम भी उठाते हैं। उस पर भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया जो उनकी रिपोर्ट में भी सामने आया कि कैसे सर्विसेज लेने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को 1.5 करोड़ रुपया दिया गया, और यही नहीं, कैसे कम्युनिस्ट पार्टी के वहां से पैसे दिए गए आईटी सेल के व्यक्ति को। मैं नाम भी आपको पढ़ के सुना दिया था, नाम याद है आपको कि फिर पढ़ना पड़ेगा? याद है? आप चल सकते हैं। तो जहां कम्युनिस्ट पार्टी के, ये देखो मैं आपको फिर दिखा देता हूं, एक और प्रवीर प्रकाष्ठा को तो जो डायरेक्टर हैं उनको तो पैसा दिया ही गया, इसके अलावा भी पैसे दिए गए कम्युनिस्ट पार्टी के बप्पादित्य सिन्हा को, गौतम नवलखा को, और ये वो लोग हैं जो माओइस्ट लिंक के लिए जाने गए। यूएपीए इसके ऊपर लगा हुआ है, नवलखा के ऊपर। तो ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है, गंभीर आरोप भी हैं और उस पर पैसे की ट्रेल भी दिखती है। अब ये तो इन लोगों को बताना है कि पैसे लिए कि नहीं लिए। आप में से कितने लोगों ने इनसे पूछा है पिछले 2 साल के अंदर आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने पैसा कम्युनिस्ट पार्टी से क्यों लिया? दूसरा सवाल यह है कि न्यूज क्लिक में पैसा किन किन पत्रकारों को और किन किन लोगों को गया जो देश विरोधी एजेंडा चलाने के लिए था, वो लोग सामने आकर जवाब देने चाहिए। एजेंसियां तो अपनी कार्रवाई करेंगे, उन लोगों को भी साफ सामने आना पड़ेगा। राहुल गांधी जी को जवाब देना ही पड़ेगा। आखिरकार ये चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ जो ये दोनों मिलकर भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? ये बहुत गंभीर आरोप आज भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा रही, आज एक बड़े पेपर में भी वहां पर भी लिखा गया, तो आज इनको इसका उत्तर देना ही चाहिए। नीरज पांडे, एबीपी। अभी जब राजीव जी अपनी बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात पर आपका प्रकाश डाला है कि समय समय पर देखा गया कि पाक द्वारा प्रायोजित या चाइना द्वारा प्रायोजित ऐसे विदेशी बहुत सारे चैनल्स या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिसके माध्यम से भारत विरोधी एजेंडा चलाया जाता है, एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन चलाया जाता है, उसके खिलाफ नियमों के तहत समय समय पर कार्रवाई की भी जाती है, लेकिन यह लगातार प्रयास जारी है। अरे बाहर से कोई करे तो समझ आ सकता है, देश के अंदर बैठकर उनका टूल बनने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर सवाल खड़ा होता है कि उन विदेशी प्रोपेगेंडा के ये एजेंट क्यों बन जाते हैं। ये फ्री न्यूज के नाम पर फेक न्यूज चलाने वालों के लिए समर्थन में कांग्रेस पार्टी और घमंडिया गठबंधन के लोग क्यों खड़े हो जाते हैं। और श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ये भी बताएं, जिस एनजीओ के हिस्सेदार हैं, क्या उन्होंने भी न्यूज क्लिक जैसी संस्था को फंड किया है? अरुण सीएन। अनुराग जी, देश में आपकी सरकार है और जिस तरह की अभी बातें आपने कही वो बहुत बड़े लेवल की कॉन्स्पिरेसी लग रही है। आपको नहीं लगता कि शुड बी बेस्ड ऑन डिप्लोमेटिक लेवल एज वेल विद चाइना? देखिए, जो बाहर की बातें वो तो करेंगे जो हमें करना है सरकार के नाते, लेकिन जो नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान जिनके है राहुल गांधी जी, वो तो देश को बताएं कि आखिरकार ये गठजोड़ जो है
ये जो 2005-7 से पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में ले रहे हैं, अब तक कितना पैसा ले चुके हैं, कहां-कहां खर्च किया, जो हाई लेवल इंफॉर्मेशन देनी थी वो क्या दिया, जो विदेशी प्लेटफॉर्म पे जाके भारत विरोधी बातें करते हैं, चाइना की तारीफों के पुल बांधते हैं राहुल गांधी जी और भारत को नीचा दिखाते हैं। क्या वो यहां पर इस बात का जवाब देंगे कि ऐसे और कितने प्लेटफॉर्म हैं जहां पर चाइना फंड कर रहा है और कांग्रेस पार्टी को उसकी जानकारी है? अगर भविष्य में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो जैसा न्यूज क्लिक के मामले में ये आकर खड़े हुए और फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर दुहाई दे रहे थे, क्या उस समय भी कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी ऐसे प्लेटफॉर्म्स के समर्थन में ही खड़ा होगी? अदिति ट्रिब्यून। Rajiv ji flagged two things. He bracketed the fact that many URLs and many channels, suspect channels, were found during the farmer agitation movement, and he also said in Manipur violence too. Can you throw some light on whether more suspicious handles have been red flagged for the Manipur violence, because he mentioned it? देखिए, अभी बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो शायद मैं आपसे साझा ना भी कर पाऊं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये जो भारत को तोड़ने का या भारत विरोधी एजेंडा कुछ लोग कई वर्षों से चला रहे हैं, अब ये न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी भारत की छवि को खराब करने के लिए, भारत के बारे में दुष्प्रचार करने के लिए, भारत में फेक न्यूज को बढ़ावा देने के लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर ये अपनी दुकान चला रहे हैं और इसके ऐसे बहुत सारे सबूत समय समय पर मिलते हैं और उचित कार्रवाई भी की जाती है। ये विदेशी हमले होंगे भविष्य में भी, लेकिन बात यह है विदेशी हमलों के सामना करने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी भारत के लोगों के साथ खड़ी है या ये विदेशी हमले करने वाली एजेंसियों के साथ खड़ी है? सवाल ये है। और आज ये दिखता है कि this Gamandiya Gathbandhan is a coalition which believes in collusion for corruption, which will lead to collision and collapse. इनका टकराव और पतन होना ही है इस गठबंधन का। कमलेश, भारत एक्सप्रेस। जब ये साबित हो गया कि उसकी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में शामिल this August House, as I rise to oppose this retrogressive bill, I ask why no government since 1992, when Delhi's special constitutional status was created, be it a BJP government or a Congress government, be it any other color of the political spectrum, be it the same political party at the center and the NCT, or be it different parties, not one of them has tried to overrule two constitution bench judgments. Not tried to overrule two constitution bench judgments on the status. Please. The status of NCT. Why did no government create an authority where the Chief Minister of Delhi is in a minority? Why did no government empower two bureaucrats to overrule an elected Chief Minister? Why did no government make the Honorable LG, who is a constitutional figurehead except in 3 areas, into a super CM? And finally, why did no government make it available to the LG's powers to appoint heads of regulatory agencies, large number, all of Delhi, for Delhi, by Delhi, funded and budgeted by the NCT government, but the power of appointment of its heads is with the LG. Honorable members of this August House, this government and this bill has done it all. Something not done earlier. Friends, why was it not done earlier? Because unfortunately it is the fitrat of this control freak sarkar, whose vendetta, whose visiting card appears to be vendetta, whose identity badge is of a graceless and fuming electoral loser. Yes.
whose approach is to control, control and control by hook or by crook, usually more by crook and less by hook. Yes. So friends, make no mistake about it. As I will demonstrate shortly, this bill is completely unconstitutional. It is fundamentally anti-democratic. It is a frontal assault on the regional voice and aspirations of the people of Delhi. It violates all principles of federalism, all norms of civil service accountability, all models of assembly-based democracy, and of course, it violates, as I will demonstrate, the basic structure. Friends, it is not about this NCT government or that. It is the deliberate regression from a people's government guaranteed to the people of Delhi 30 years ago. And hence it is a decimation of the most fundamental constitutional values on the basis of which 239AA and that entire chapter was passed. That is why, friends, we must all collectively rise to oppose it. Because otherwise, friends, Iqbal's words will haunt us when he talked of Tariq ki nazrein, and he said, "Lamon ne khata ki, sadiyon ne saza pai." Friends, we must also collectively oppose it, because someday this anti-federal knock will come at your door. ये उनके लिए सोचने की बात है जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं या समर्थन करने की घोषणा कर दी है, जो आज दिल्ली सरकार के साथ हैं। शायद कभी आपके पास भी जल्द ही आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। सबका नंबर आ सकता है। उस वक्त जब नंबर आएगा तो आपको सिर्फ याद आएंगे मार्टिन न्यूमेलर के वर्ड्स। वो पुराने जाने माने शब्द हैं, लेकिन मैं दोहरा रहा हूं। First they came for the socialists and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews and I did not speak out because I am not a Jew. Then they came for me and for you, and there was no one left to speak for us. Friends, what does, let me start with my two heads. What does this bill do textually first? And secondly, what is the consequence of that text? Let me deal with these two aspects first. दोस्तों, ये बिल एक सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाता है और उसको व्यापक शक्तियां देता है सुझाव देने की, हर नियुक्ति, हर स्थानांतरण, हर चीज के बारे में, ग्रेड ए अफसर से लेके दानिश अफसर तक। व्यापक है, विशाल है। कौन किसी और की सरकार में वित्त का सेक्रेटरी बनेगा, कौन पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी बनेगा, उनके बीच में अदला बदली कब और कैसे होगी, ये माननीय एलजी करेंगे निर्णित, न कि चुनावित सरकार। ये बड़े स्पष्ट प्रावधान है। मैं अभी आपको प्रावधान के नंबर नहीं दे रहा हूं। दूसरा, जितने भी सतर्कता के अधिकार क्षेत्र हैं और जितने भी नॉन सतर्कता, नॉन विजिलेंस, वो सभी केसेस अनुशासनहीनता के विषय में सब इस अथॉरिटी में आएंगे सुझाव के लिए और माननीय एलजी के पास निर्णय के लिए। इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। उद्देश्य है एक भय और हिस्टेरिया का माहौल बनाना, एक खौफ पैदा करना, जिससे कि आप इन सभी सचिवों को कंट्रोल कर सके, जो कि दिख रहा है दिन प्रतिदिन। तीसरा, ये अथॉरिटी में 3 व्यक्ति हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा ओहदा दिया है, अध्यक्ष बनाया गया है। ये अजीब सा अध्यक्ष है दोस्तों। कोरम है 2 लोगों का, ये एक चेयरमैन है बिना चेयर के। मैंने वैश्विक और भौगोलिक रूप से आज तक कहीं नहीं देखा मेरे सीमित अनुभव में कि एक चुनावित चीफ एग्जीक्यूटिव 2 सचिवों के नीचे आएगा। ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे, ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा। और उसके बाद, और ये सब प्रावधान है, एक एक चीज में जो बोल रहा हूं प्रावधान है, उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस
जो हमारे सामने बैठे हैं, माननीय गृह मंत्री, ये सब गृह मंत्रालय में आएगा। चौथा दोस्तों, बाद में चौथा, जितने बोर्ड्स हैं, समितियां हैं, संस्थाएं हैं, वो सब, और इसमें बहुत हैं, महत्वपूर्ण हैं, अल्पसंख्यक संघ, दिल्ली सूरेज बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, सो मेनी, लेबर वेलफेयर बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ऐसे 20 की सूची हमने दी है न्यायालय में। उन सब की बजट बनाएगा ये एनसीटी सरकार। उनके काम होंगे एनसीटी के लिए, एनसीटी के लोगों के लिए, लेकिन उनके अध्यक्ष, उनके हेड को वहीं से अपॉइंट होंगे, सुपर सीएम या गृह मंत्रालय से। पांचवा, जो दूरगामी नीतियां हैं सभी सिविल सर्विस के लिए, उनके टेन्योर के लिए, उनके स्थानांतरण के लिए, उनकी नियुक्तियों के लिए, कौन सी पोस्ट नाजुक है, कौन सी पोस्ट सेंसिटिव नहीं है, और उपयुक्तता, वर्ड इस्तेमाल किया, सूटेबिलिटी, उपयुक्तता इस अफसर की इस पद के लिए, ये सब, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होना चाहिए, ये सब माननीय सुपर सीएम, और अंततोगत्वा हम जानते हैं कि जो सब चीज करती है नियंत्रण, वो होम मंत्रालय। हर छोटी चीज के लिए, हर बड़ी चीज के लिए पूर्ण रूपेण व्यापक निर्बाध टेक ओवर, कब्जा, निर्बाध कब्जा है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, आप जैसे उच्चतम पद पर विराजमान महानुभाव, क्या आप अफसर क्लासेस के लिए निचले से लेके सेक्रेटरी तक नीतियां आप बनाना चाहते हैं? कम से कम वो तो एक छोटे ओहदे वाले मुख्यमंत्री के पास छोड़ दीजिए। Sixthly, friends, the secretary, this is amazing. The annals of history of legislation have not seen bills like this. The secretary of the department is made in charge of preparing and authenticating every memo, including cabinet notes. Not bad yet. Disagreements between the secretary and the minister have to be recorded in writing and then sent to the LG, and the secretary in the act itself, in the bill itself, says that the secretary may write on the note which he sends to the LG why the secretary thinks that the Council of Ministers is taking a decision contrary to law. Any law. Law means any law. Any law of India, in the opinion of the secretary, is being violated by the Council of Ministers, goes to the LG. It makes, friends, the elected government hollow. A chief minister paralyzed, unable to act. Any minister shivering before his or her secretary. And the bureaucracy looking up to the LG even for sneezing. And the LG, of course, looking up to the Home Ministry. ऐसे हालात को देखकर मुझे वो पुराना शेर याद आया दोस्तों, एक काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर. This bill, friends, eliminates 2 out of the 3 interlocking, fundamental, distinct chains and institutions which form the bedrock of any assembly-based democracy, and therefore they hit at the very root of the basic structure. These 3 interlocking chains, which are discussed in 10 paragraphs of the Supreme Court judgment, I wish somebody had read the judgment carefully before drafting the bill, are 1, a political executive through the Council of Ministers answerable to the people; 2, a civil service answerable to the political executive and hence accountable to the people through the political executive; and regulatory agencies which are an integral part of governance in any system. The bill simply eliminates number 2 and 3. Out of 3, it takes away 2. Friends, the object is not to make Hamlet the Prince of Denmark, not even the slave of Denmark, but to take over Denmark itself. It is to make Denmark a hollow shell, substitute NCT for Denmark. Its second impact is that it eliminates the accountability of the civil service completely. In doing so, it eliminates the very concept of Westminster-style democracy, which Delhi is supposed to be fully Westminster-style minus 3 subjects only. The civil service, friends, after this bill will jump, bend, crawl, answer,
at the behest of an external agency, be it the Home Ministry or the Super Chief Minister. There is not even a token diarchy of powers between the CM and the LG. It converts an impartial civil service into a dictatorial civil service. Shame. It gives a real example of that forgotten serial which I love to watch and all of you have watched. Yes, Minister. The civil servant is saying only no, Minister. Remember what Nehru said about the ICS. That time, Indian Civil Service says this is neither Indian nor civil, nor does it provide service. I'm not sure how accurately it will apply in 2023, but I think he came very close to it. एक म्यान में दो तलवार नहीं है ये केस. म्यान भी एलजी के पास है और तलवार भी केंद्र सरकार के पास है. मुख्यमंत्री एक कोने में खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं सिर्फ. My third head of submission to this August House, friends. This bill seeks to amend the Constitution by an act of Parliament. The Constitution and the debates underlying it all wanted Delhi to have all powers -3. This bill adds a fourth to those 3, and it does it magically without a constitutional amendment. It is indeed magic, even if it is black magic, because you can amend a constitution without a constitutional amendment. Absolutely black. Fourth, decimating 2 out of the 3 prongs of a Westminster-style democracy, which has an answerable and accountable civil service and a regulatory agency, clearly violates the basic structure, because the basic structure of an assembly-based democracy includes these 3 interlocking chains. I believe that that would be a very likely Supreme Court conclusion if at all this bill is passed. Fifthly, it also violates the basic structure in another manner. The principle of decentralized federal government that has already been a part of the basic structure from the days of Bombay in 1993, around the time, by the way, when 239AA was created. If there is one animating bedrock philosophy underlying 239AA, it is decentralized federal governance. Otherwise, why not keep Delhi as a mere large municipality under central government's control? Advani ji हुआ करते थे बहुत बड़े अधिकारी ऐसे municipal setup में पहले. Why not a mere union territory? You know, there are 10 of them. Delhi is the only one to have been given the constitutional status by a constitutional amendment. No other union territory. Why? Para 77 of the 2023 judgment partly answers that. I quote, "In the spiral of cooperative federalism, the Union of India must exercise its powers within the boundaries created by the Constitution. NCT Delhi, in having a sui generis federal model, must be allowed to function in the domain chartered for it by the Constitution. The Union and the NCT share a unique federal relationship. It does not mean that NCT is subsumed in the Union merely because it is not a state." ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं. Friends, Delhi alone, out of 10 such territories, was given this constitutional status. Not only because federalism and the aspirations of the people of Delhi were recognized, but the idea was that you will not be able to amend it out of shape, out of character, without a constitutional amendment. You don't have it today. You have a statute. This arrogant government, and this is very interesting, this arrogant government first tried it by invading Delhi's special status in 2016 and 17. Forgotten now, by executive action without even a statute. We argued and we got a 2018 first Constitution Bench judgment which struck it down. It did it again by a second notification without a constitutional amendment and lost it, and the judgment came in 2023, a few months ago. But friends, unfortunately there is no cap on deliberate foolishness. There is no bar to repetitive constitutional error. They have done this again. This time they've upgraded it from a notification to a statute, but still without a constitutional amendment. And even if this bill is passed, which I am sure it will not be, the result will be the same a third time. History will repeat itself.
Friends, constitutional stupidity masquerading as power is by no means a new phenomenon, especially when reason falls on deaf ears. The result is always the same: जिहालत, हिमाकत और नफरत. संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर दोस्तों लम्हों की बात नहीं है, सदियों की बात है. और अगर संविधान को सदियां सुनेगी, लम्हे नहीं, तो हम सबका उत्तरदायित्व बनता है कि हम उस संविधान की आवाज की हिफाजत करें. क्योंकि अदर नहीं तो संविधान चीख चीख कर कहेगा मुझे लम्हे नहीं, सदियां सुनेंगी, हिफाजत से मेरी आवाज रखना. आज आप केंद्र में हैं, मैं आप पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं. आज आप ट्रेजरी बेंच में हैं, कल कोई और होगा. ये कायम रहेंगे कि अच्छा किया आपने हस्तक्षेप किया, क्योंकि आपके कायम शब्द के लिए मेरे पास एक जवाब है. तुमसे पहले भी वो जो शख्स यहाँ तख्त नशीन था, तुमसे पहले भी जो यहाँ शख्स तख्त नशीन था, उसको भी अपना खुदा होने का इतना ही यकीन था. बल्कि बशीर बद्र को कृपया भूलिए नहीं. आप लोग सब जानते हैं उसको, मुझे भी कोट करते रहते हैं आप में से कई. बशीर बद्र को उसने ही कहा था, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है. शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है. जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है. तो इसलिए कायम शब्द का इतना अहंकार नहीं होना चाहिए. Sixthly, friends, let me read some seminal words in the 2023 judgment. Now, these are going to take a little bit of time. It's a longish quotation, but it's very important for this House. 10 paras, and I'm only reading selectively, of the Supreme Court. It's completely forgotten. I'll read a little quickly and fast. This is a unanimous judgment, not a single dissent. And these words have been ignored, and they are not my words. Even though it's long, pardon me, allow me to read it. It's the highest court of the country. In a democracy, each word I'm reading is a quotation, and I can assure you these words will come to haunt you. In a democracy, accountability lies with the people who are the ultimate sovereign. The cabinet, consisting of elected representatives, is collectively responsible for the proper administration of the country and is answerable to the legislature for its actions. The government is responsible for the decisions and policies of each of the ministers and of their departments. This creates a multi-linked chain of accountability, where the legislature is accountable to the people who elected them and the government is collectively responsible to the legislature. It's quite amazing. Collective responsibility is an important component of parliamentary democracies. The day-to-day decisions of the Council of Ministers are to be implemented by a neutral civil service under the administrative control of the ministers, in order to ensure that the functioning of the government reflects the preferences of the elected ministers and through them the will of the people. It is essential to scrutinize the link of accountability between the civil service professionals and the elected ministers who oversee them. Under the Westminster parliamentary democracy, civil service constitutes an important component of a triple chain of command that ensures democratic accountability. Har shabd ki dhajjiyan uda raha hai ye bill. Har shabd ki. The triple chain of command is as follows. Civil service officers are accountable to the ministers. Ministers are accountable to parliament. And thirdly, parliament legislature is accountable to the electorate. An unaccountable and non-responsive civil service may pose a serious problem for governance in a democracy. It creates a possibility that the permanent executive, consisting of unelected civil service officers who play a decisive role in the implementation of government policy, may act in ways that disregard the will of the electorate. In a federal polity, a fundamental question which arises is which would be the more appropriate authority to whom the civil service officers would be accountable. Everything which the bill is saying is dealt with here. In a democratic form of government, only one more para is left, friends, the real power of administration must reside in the elected arm of the government, subject to the confines of the Constitution. A constitutionally entrenched and democratically elected government needs to have control over its administration. If a democratically elected government is not provided with the power to control the officers posted within its domain, then the principle underlying the triple chain of command of collective responsibility would become redundant. That is to say, if the government is not able to control and hold to account the officers posted in its service, then its responsibility towards the legislature as well as the public is diluted.
The principle of collective responsibility extends to the responsibility of officers, who in turn report to the ministers. If the officers stop reporting to the ministers or do not abide by their directions, the entire principle of collective responsibility is affected. Therefore, GNCT ought to have control over the services. Now, I know there's a statute. I'll deal with their best defense, which has been raised by the government. But first, I've read to you 10 paragraphs. For those interested, from 102 to 111. Clearly, friends, this bill is therefore, in the light of these paragraphs, stillborn. It does not, indeed cannot remove the basis, which is this of the unanimous Constitution Bench judgment. These quotations I have just read are bedrock principles. This bill is simply providing provisions directly contradicting these bedrock principles. It cannot simply nullify a unanimous Constitution Bench. It must at least amount to removing its basis and rendering that judgment inoperable. I have just read to you passages which are impossible to remove the basis of. These are bedrock principles. How do you remove the basis? It is therefore trying to overrule directly a Supreme Court judgment. It therefore is an impermissible constitutional exercise if you try to nullify a Supreme Court judgment without removing its basis. It is not only does this bill insult the people of Delhi, it insults the Supreme Court. It insults our intelligence. कभी दिल में ख्याल आता है कि जैसे 1935 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में चुनाव जरूर रखे थे, लेकिन पावर नहीं रखा था कुछ भी। क्या यही कॉलोनियल मॉडल का आप कार्यान्वित कर रहे हैं आज इस बिल द्वारा? हम आपको चुनाव दे रहे हैं, पद दे रहे हैं, लेकिन पावर नहीं दे रहे हैं। Is this not an illegal power grab through the back door? Yes. Now, seventhly, friends, I come to the main defense, the only defense of the government, because you should know this, how wrong and how fallacious it is. It is based on clause 7A and B of the article. Can I just read? None of you need to be lawyers to understand this, the text of the, and you'll get the answer automatically. This is the entire defense. Parliament may by law make provision for giving effect to or supplementing, mark the word, for giving effect to or supplementing the provisions contained in the foregoing clauses, and for all matters incidental or consequential thereto. Friends, these words on bare text mean that to reinforce, operationalize, effectuate and implement the earlier provisions which provide the entire architecture for Delhi, Parliament can make laws. This was a provision put so that every time something is to be made to fill a gap, to plug a hole, you don't have to have a constitutional amendment. Parliament is sufficient to plug that hole, to reinforce the Delhi's architecture. Friends, the short point is, can you destroy or decimate that architecture and structure by resorting to a provision that says that the power is exercisable to reinforce it or implement it? ये इस प्रावधान के साथ विश्वासघात नहीं है क्या? 7A and 7B were created when implementing the true letter of, you could reinforce or plug the gaps without amending the constitution. It can never be used to destroy, to supersede, to bury that architecture itself. If this ridiculous interpretation is accepted, does it mean that by this brute parliamentary majority, today you have transferred services to the central government, tomorrow you will do this for each item, electricity, parks, highways, Waqf board, labor board. Then why not have Delhi as a municipality? Why create the constitutional architecture? And that too by using clause 7, which says supplement, reinforce, implement, incidental. At the end of para 46 of the 23 judgment, which nobody appears to have read, as far as the bill makers are concerned, it says again, if we interpret the phrase insofar as such matter is applicable in a manner, insofar as such matter is applicable to union territories, in a manner to exclude a greater number of entries than what is already excluded, that is in addition to 3, it will defeat the very purpose of granting a special status to NCT. This is the Supreme Court in para 46. In other words, friend, this government, like Alice in Wonderland, says words will mean what I say they will mean. That's their interpretation of 7. I will use 7 as a Brahmastra, not to supplement and implement 239AA, but to supplant it, to reduce it to vanishing point. The scalpel created to heal
to cauterize, to cure, to fill gaps, to make you more healthy, will now be used to stab and kill. Obviously, only Alice in Wonderland in this government is on the same page on this. दोस्तों, ये सब प्रावधान जैसे क्लॉज 7 है और इस तरह प्रकार के प्रावधान कई जगह होते हैं, आम चीज है, लोगों की आवाज को ज्यादा सशक्त बनाने के लिए है, विकास और समृद्धि की गति और दिशा को प्रोत्साहित करने के लिए है, न कि वोट डालने वाली जनता को निहत्था बनाने के लिए, उसको बेबस करने के लिए। इस बिल ने ऐसे सभी उद्देश्यों को अपने माथे पे उल्टा करके लग दिया है। संविधान को इस प्रकार से विकृत करेंगे आप तो परवीन शाकर के शब्द पूरी तरह से लागू होंगे। ए मेरी गुलजमी तुझे चाह थी एक किताब की, अब संविधान वाली किताब की बात कर रहे हैं। ए मेरी गुलजमी तुझे चाह थी किताब की, अहले किताब का मगर क्या तूने हाल कर दिया। Those in the treasury benches adopting this are actually distorting it out of recognition. The fundamental error of the central government and of the Honorable Home Ministry is to confuse the existence of power with the validity of its exercise. For the last several days, we have been hearing curtain raisers coming from the Home Ministry that we have the power. We are not talking about competence. The question is, if you have the power, its existence is subject to substantive limits. 3-4 minutes more. What you do not have is the power to cross the Lakshman Rekha, which this bill is designed to cross. The question of competence to pass a law, which I am not at all addressing here, is quite different from whether the law is a valid exercise of such competence. Not when it violates the basic structure, not when it violates substantive provisions. Friends, the bill is designed to violate specifically all those substantive limits. This is beyond the remit of any statutory bill. Whether even a constitutional amendment can do it, we will see when they bring a constitutional amendment in a 4th round. But the statute being lower than the constitution must go. The constitution is itself challengeable if it violates the basic structure. That stage has not come. Turning now to my 8th head, and I'm finishing very quickly, just give me a few minutes more. It is convenient to forget, and this you'll be interested to know, now that we are having a bill, we tend to forget this. There were no exigent circumstances on 19th of May when you passed the ordinance. The Supreme Court has said in 100 judgments, you must demonstrate how, quote unquote, it is necessary to take immediate action. Immediate necessity is distinguished from mere desirability. These are not my words, they are Supreme Court words. Expression necessity coupled with immediate action conveys the sense that it is imperative due to an emergent situation to promulgate an ordinance. Now I want to tell you, on 11 मई 2 महीने की जिरे और बहस के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने निर्णय दिया। 6 दिन बाद 17 मई को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया ऑर्डिनेंस, लेकिन पारित नहीं किया, घोषित नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे 2 दिन बचे हैं अभी उच्चतम न्यायालय के बैठने के लिए। 19 तारीख को उच्चतम न्यायालय अवकाश पे जा रही थी। The revised time given to you by the LOP was 1 second. Some of my friends here are prepared to donate some time. 30 minutes. You have left only 13 minutes for Mr. Chidambaram. 2 minutes more. 2 minutes more. So you will leave 11 minutes for him? Yes, yes. Then there are other people to donate time to us. There are other people. On 19th May. 1 second. Important legislation रहने के ये जरूरी है कि बहस अच्छी हो रही है। बहुत दिन के बाद बहस अच्छी हो रही है, सभी लोगों को सुनने में आ रहा है और नॉलेजेबल है, तो आप कंसीडर करिए, आपके हाथ में है, और एक 10 मिनट एक्सटेंड कर दीजिए। Every minute used by you, doctor, will cut into the time of Mr. Chidambaram. No. Initially, both were given equal time. Then his time was increased. माननीय अध्यक्ष, Go ahead. माननीय अध्यक्ष महोदय, Last 1 minute. 17 तारीख को ये अप्रूव हो गया कैबिनेट द्वारा। इसको आप 19 की शाम को 5 बजे के बाद जब मैं घर जा रहा था कोर्ट से क्यों लाए? क्योंकि आपको मालूम है कि 19 तारीख लास्ट डे था कोर्ट के फंक्शनिंग का, उसके बाद अवकाश थी। क्या यू वेट फॉर 2 days fearful that the Supreme Court is sitting till 19th May? Is this not cheap tactics and chicanery at its worst? The
deleterious effects of this ordinance were visible in the last 2 or 3 months it's been there. Governance is at a standstill. 2 bureaucrats are threatening to take majority decisions over the Chief Minister's head. The LG daily trespasses in all domains of elected reps. Heads of bodies funded and operated by NCT are approved and controlled by the Home Ministry. NCT is reduced to a fiefdom of the central government. Insubordination is at its peak. हमारी बात आप सुनते, मैं बस अंत कर रहा हूँ 1 मिनट में. हमारी बात तो आप सुनेंगे नहीं, सुनते नहीं हैं. कम से कम अपने मार्गदर्शक मंडल की बात तो सुन लिया करिए, या कभी कभी उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, उनको भी भूल गए आप लोग. मार्गदर्शक मंडल से बात कर लीजिए, क्योंकि आपकी सरकार, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आपके मार्गदर्शक गृह मंत्री अडवाणी जी दिल्ली को पूरा स्टेटहुड जाने का बिल लाए थे. और जब आप 2 चुनाव दिल्ली के जीते इस मुद्दे पे कि दिल्ली के पास पूरा स्टेटहुड होना चाहिए, तो मदन लाल खुराना जी, आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था, कोट, फुल स्टेटहुड फॉर दिल्ली इज द रेमेडी फॉर ऑल इट्स इल्स. आज देश और दिल्ली आपसे फुल स्टेटहुड नहीं मांग रहा है. आज सिर्फ वो इतना विनती कर रहा है कि जितना बाएं हाथ दाएं हाथ ने संविधान ने दिया है उतना बाएं हाथ से तो नहीं लीजिए. इतनी छोटी सी विनती कर रहा है. जहां तक दुख और आक्रोश का सवाल है, ये एक दुखद और खतरनाक प्रस्तावित कानून है दोस्तों. अंत करूंगा मैं ये कहकर कि ये दिल्ली के बारे में शेर बिल्कुल उपयुक्त बैठाता है. ये बिल, ये प्रस्तावित कानून चेहरे पे सारे शहर के गर्द मलाल है. जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है. दुख और आक्रोश का हाल है. डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी 20 मिनट्स. माननीय सभापति महोदय, आज जब इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक के ऊपर मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो पहले मैंने विपक्ष के विद्वान वक्ता महोदय का वक्तव्य सुना तो मुझे विचित्रता का अनुभव हुआ और संपूर्ण विपक्ष को देखकर विस्मय हो रहा है. विचित्रता इसलिए कि उन्होंने कहा कि आई हैव नॉट सीन एनी पैरेलल एनीवेयर. तो मैं भी कहना चाहता हूं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी देश की राष्ट्रीय राजधानी में उस देश की केंद्र सरकार की शक्तियां, उससे अधिक शक्तियां किसी और की होनी चाहिए. मेरे विचार से दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा. सो आई सपोर्ट व्हाट अभिषेक मनु सिंघवी जी हैज सेड. आई एम अनेबल टू फाइंड पैरेलल एनीवेयर इन द वर्ल्ड. दूसरा विषय जो मैंने कहा कि विस्मय का अनुभव क्यों हो रहा है, अभी देखिए उन्होंने 2 बार सुपर सीएम प्रयोग किया कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए. मगर महोदय, इस देश ने बगैर संवैधानिक पद पर बैठे हुए सुपर पीएम 10 साल तक देखा है. और मैं ये कह रहा हूं कि अभी मैंने कितना सुंदर सामंजस्य देखा कि उन्होंने कहा कि समय कम हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी वालों ने कहा हम भी समय देने को तैयार हैं. सारे विपक्ष को देख के विस्मय होता है कि कांग्रेस पार्टी, जिसका कि 3 राज्यों में स्थिति यह रही कि गुजरात में वोट हाफ कर दिया. बिल्कुल बता रहे हैं, सुनिए तो, अरे सुनिए तो, बता रहे हैं. सॉरी, गुजरात मेंबर्स का वोट one second. Dr. Abhishek Singhvi was heard in rapt attention. This is the decorum of the house. No. Yes, I am coming to that, sir. Let me do not get into disruptive mode. Dr. तो मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग किस तरीके से आए हैं साथ में. अरे साहब, बहुत सारे शेर बोले तो ऑर्डिनेंस के पार्ट नहीं थे, हम भी बता रहे हैं आपको. I will have to name you. देखिए इनकी I will have to name you. ठीक, You have got it as a habit. क्या शिद्दत दिख रही है एक दूसरे को सपोर्ट करने में. देखिए इनकी स्थिति ये, we want decorous debate here. Doctor said many things, maybe digestible, maybe indigestible. Dr. Sudhanshu Trivedi. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया और आपने इनको माफ कर दिया. और उसके माफी के बाद भी
मुझे लगता है अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था, तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, आप साथ में आए हैं दिल्ली के इस बिल पे, दिल्ली की जनता के लिए आए हैं या किसी और कारण से आए हैं, ये दिल्ली की समझदार जनता समझती है। तो मैं भी एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। अब यह एक संवैधानिक विषय है, संवैधानिक विषय है कि यह जिस प्रकार से संविधान में लागू होना चाहिए, परंतु उसके साथ राजनीतिक टीका टिप्पणी की जा रही है, तो एक सैद्धांतिक विषय भी आता है। तो मैं संवैधानिक और सैद्धांतिक दोनों विषयों का जवाब दूंगा। आई विल रिप्लाई बोथ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में बहुत स्पष्ट किया था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, यह एक विशेष श्रेणी का यूनियन टेरिटरी है, यानी विशेष श्रेणी का संघ शासित राज्य है। वैसे मुझे लगता है संघ शब्द आते ही बेचैनी ज्यादा हो सकती है दूसरी तरफ, और संघ शासित से बेचैनी और हो सकती है, इसलिए मैं यूनियन टेरिटरी वर्ड प्रयोग करूंगा। इट इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरी। और वैसे भी आजकल अंग्रेजी के प्रति मोह बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपने गठबंधनों का भी नाम अंग्रेजी में ही ज्यादा रखा जा रहा है। संविधान में जो भाग 8 में उल्लिखित, वैसे तो जब मैंने टीवी चर्चा के दौरान कई बार विपक्ष के लोगों से INDIA का हिंदी फुल फॉर्म पूछा, तो पहले दिन तो लोग गूगल देख के भी नहीं बता पाए। खैर, अब मैं कहना चाहता हूं कि संविधान के भाग 8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, अरे सुनिए बात, देखिए संविधान के भाग 8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अनुच्छेद 239 से 242 तक संविधान में इस विषय का पूर्ण वर्णन है। अनुच्छेद 239AA में इसका विशेष प्रावधान किया गया है। यदि उसके क्लॉज को 239AA3B को देखें, तो संसद को दिल्ली संघ राज्य यूनियन टेरिटरी से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के जिस निर्णय का बार बार उल्लेख किया जाता है और हमारे विरोधी उसको अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं, उसमें भी बहुत साफ देख लें कि 105 पेज के उस निर्णय में कहीं पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के द्वारा दिल्ली के बारे में कानून बनाए जाने के विषय के ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके बाद भी न्यायालय के आदेश में पैरा 161 और 162 को कई बार उल्लेख किया जाता है, परंतु यदि पूरे संदर्भ में देखें तो पैरा 86, 95 और पैरा 164F को पढ़ें, तो वहां पर संसद के द्वारा दिल्ली के संदर्भ में किसी भी विषय के ऊपर कानून बनाने की शक्तियों का विधिवत अनुमोदन है, कहीं पर निगेशन नहीं है। और स्पष्टता के साथ इसकी आवश्यकता क्यों थी? ताकि शासकीय आदेश को एक विधायी शक्ति भी मिल सके, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को एक लेजिस्लेटिव पावर भी मिल सके। इसलिए उस अस्पष्टता को दूर करने के लिए, टू रिमूव एनी एन आयोटा ऑफ सस्पिशन, यह आवश्यक था। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। अब कई बार लोग कहते हैं साहब अध्यादेश की आवश्यकता क्यों थी? वैसे तो माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस विषय को लोकसभा में बताया था। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि 19 तारीख को अध्यादेश क्यों आया। शायद उन्हें ध्यान हो कि दिल्ली सरकार में जैसे ही चंद दिनों में ताकत मिली, तो सबसे पहले किन फाइलों के बारे में, सतर्कता के साथ सतर्कता विभाग की फाइलों के बारे में कार्रवाई की गई। मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार सतर्कता सचिव ने यह रिपोर्ट किया कि रात 9 बजे मंत्री के द्वारा उनको कॉल किया गया, सुबह 3 बजे तक वह कार्रवाई चलती रही, 76 से अधिक फाइलें मंगाई गईं और उन्होंने उपराज्यपाल महोदय को यह आशंका भी व्यक्त की कि उसमें कई ऐसी फाइलें थीं जो कि गोपनीय थीं और उसके अनुसार उन फाइलों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ भी संभव है। अब मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि दिल्ली में बाढ़ आई तो दिल्ली फ्लड कंट्रोल अथॉरिटी की बैठक तो 2 साल से नहीं हुई, मगर विजिलेंस की फाइलें ओवरनाइट सर्च की गई। तो मेरे विचार से, और ये सर 16 और 17 मई की रात का था, तो मानी हुई बात है जब ऐसी परिस्थिति नजर आएगी तो उसके 1-2 दिन के अंदर अध्यादेश की आवश्यकता महसूस होगी। यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी पे नियंत्रण की बात आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा की जाती है, तो ये लोग तो अपनी एक पैरेलल ब्यूरोक्रेसी भी बना चुके हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के समाचार पत्रों में आया है कि कई ऐसे लोग जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सरकारी पदों पर भी विद्यमान हैं और सरकारी पदों पर रहते हुए सरकारी शक्तियों का भी उपयोग कर रहे हैं। वैसे ये लोग बहुत दावा करते हैं कि इन्होंने बहुत सारी चीजें फ्री दी।
फ्री दिया, कुछ 100 रुपए दिल्ली की जनता को कुछ मामलों में फ्री मिला और अपने लोगों को कई मौकों पे, कई जगहों पे, दर्जनों से ऐसे लोग हैं जिनको लाख लाख, 1.5 लाख की तनख्वाहें मिली। और यदि आरोपों को देखा जाए तो करोड़ों रुपए के घोटालों के आरोप हैं। एक कहावत होती है, माले मुफ्त दिले बेरहम। तो मैं कहना चाहूंगा इनकी तो स्थिति यह है कि माले मुफ्त दिले बेरहम, दिल्ली पे सितम और करोड़ों हजम। अब एक और बात जो ब्यूरोक्रेसी के नियंत्रण की बात है, तो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस दिल्ली प्रदेश में एकमात्र ऐसा प्रकरण हुआ जो पूरे देश के इतिहास में बहुत विचित्र था कि दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के अंदर अपने साथ मैन हैंडलिंग का आरोप लगाया। मेरे विचार से पूरे भारत के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा कि इस प्रकार की बात, इस प्रकार का आरोप लगा हो और वह भी मुख्यमंत्री की उपस्थिति में लगा हो। यह दर्शाता है कि ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रण करने की जो छटपटाहट है उसमें वास्तविकता में वो फितरत क्या है। और मैं एक टेक्निकल पॉइंट कहना चाहता हूं, दिल्ली का कोई स्टेट कैडर नहीं है, जैसे राज्यों का कैडर होता है तो राज्य का मुख्यमंत्री उस कैडर को नियंत्रित करता है। जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी होते हैं वो यूनियन टेरिटरी कैडर में आते हैं। जब वो सारे राज्यों में, सारी केंद्र शासित राज्यों में उनका स्थानांतरण हो सकता है, तो मैं आपके माध्यम से विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि यदि दिल्ली के एक अधिकारी का ट्रांसफर गोवा होना है और दिल्ली के सीएम की उस पर एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी तो यह कैसे संभव हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस विषय के ऊपर केंद्र सरकार की शक्तियां परिभाषित हैं। अब एक दूसरी बात भी है, दिल्ली में स्टेट कैडर भी नहीं है, यानी जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और राज्य के कैडर होते हैं, तो यहां भी दानिश कैडर है। यानी दानिश कैडर में भी 3-4 यूनियन टेरिटरी आती हैं, दमन दीव और अन्य। अब दानिश कैडर के एक अधिकारी की जरूरत यदि अंडमान में या दमन दीव में भी होगी और दिल्ली का मुख्यमंत्री यह तय करेगा, तो क्या यह संवैधानिक दृष्टि से उचित है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो यह विषय रखा है वो पूरी तरीके से उचित है। अब दुरुपयोग की बात में मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इनकी वास्तविक मंशा क्या थी। दिल्ली में एक जनरल फाइनेंशियल रूल 2019 है जो ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए से अधिक का अगर किसी भी प्रकार का व्यय होगा तो वह मंत्री की शक्ति से बाहर होगा और वह एलजी के पास जाएगा। महोदय, इनके मुख्यमंत्री जी का जो मकान या वजीर आला का अजीमुशान महल बनाने के लिए जो बिल बने साहब, वो पूरे उसके एक साथ नहीं बने। 10 करोड़ से कम के 8.5, 8, 7.5, 9 करोड़ रुपए के डिफरेंट बिल बने। और एक मद ऐसा है जिसमें कि मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारियों के लिए, महोदय जानते कितने का बिल बना? 9.99 करोड़। यानी 0.01 से कैसे बचा जा सकता है कि टेंडर न करना पड़े, मन मुताबिक खर्चे कर लिए जाएं। यह दर्शाता है कि नियमों के प्रति और ब्यूरोक्रेटिक नियमों के प्रति इनके मन में क्या आस्था है। और इतना ही नहीं, दिल्ली मेट्रो के लिए तो वृक्ष काटने की परमिशन वर्षों तक नहीं मिलती थी, मगर मुख्यमंत्री आवास के लिए वृक्ष काटने की परमिशन उनको मिल जाती थी। अब इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक नैतिकता, सैद्धांतिकता का सवाल उठाया जाता है। तो मैं कोट करना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, जिनका वो आलीशान शीश महल बना हुआ है, उन्होंने 27 अक्टूबर 2013 को शीला दीक्षित जी के विषय में लिखा था ट्वीट, और उनको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हैं, मैंने तो सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगे हैं, कौन भरता है इस एसी का बिल। और आगे वो कहते हैं, मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तो कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान घर में कैसे रह सकता है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए केजरीवाल जी का कलेजा कापा हो या ना कापा हो, रूह कापी हो ना कापी हो, रूह है क्या है, किसकी रूह है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि शीला दीक्षित जी जहां भी होंगे उनकी रूह को बहुत तकलीफ हो रही होगी कि जब उनके ऊपर ऐसी बातें करने वालों के साथ वो सारे लोग आज आकर खड़े हुए होंगे। वैसे महोदय, उनके घर में 10 एसी थे, यहां तो 15 टॉयलेट भी हैं। और इतना ही नहीं, 1-1 करोड़ रुपए के पर्दे भी लगे हुए हैं, और 1 करोड़ रुपए के पर्दे का एस्टीमेट है। और इतना ही नहीं, अब सुनिए, उनके सामने एक दूसरी समस्या हो गई है कि अभी तक जो बातें चल रही थी, अब उनके सामने यह समस्या है कि उन चीजों को कैसे छुपाएं। देखिए, मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि अब उनकी फितरत जग जाहिर हो चुकी है।
तो आज आम आदमी पार्टी की स्थिति यह है कि अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। अब इस घर को सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। और यहां पर इसके बाद मैं कटाक्ष के बाद एक बात करुणा के साथ कहना चाहता हूं कि अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली हुई वो पार्टी जो एक कमरे के मकान में रहते थे और उससे निकली हुई पार्टी आज सैकड़ों करोड़ के आलीशान मकान में रहती हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता और जिन जिन लोगों ने उस आंदोलन का समर्थन किया उनके ऊपर भी एक आघात है। और साथ ही साथ ये एक बात का और भी संकेत देता है, फूड फॉर थॉट है देश के लोगों के लिए, कि एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स कई बार बड़े विचित्र परिणाम भी देती है। अब किसी नए नवेले प्रयोग को आजमाने का वक्त नहीं है, बल्कि आजमाए हुए मोदी जी के नेतृत्व को चमकाने का वक्त है। और बहुत से लोग ये कहते हैं, संवैधानिक नैतिकता का प्रश्न उठाते हैं कि अध्यादेश क्यों लाया गया। अध्यादेश के लाने का तात्कालिक कारण मैंने बता दिया, और वैसे मैं अपने विपक्ष के लोगों के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं कि इन लोगों ने कितनी बार अध्यादेश लाए हैं। नेहरू जी की सरकार में 70 बार, इंदिरा जी के जमाने में 77 बार, राजीव जी के समय में 35 बार, नरसिम्हा राव जी के समय में 77 बार, मनमोहन सिंह जी के समय में 61 बार, और जो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनी थी भाजपा विरोध में, उसमें 1.5 साल में 77 बार। तो मुझे लगता है अध्यादेश का विषय उठाने से पहले इस अंक गणित को भी देख लेना चाहिए। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं जो संविधान की दुहाई देते हैं उनके लिए। ये तो वो लोग हैं सभापति महोदय जिनकी संविधान में क्या आस्था है। इन्होंने संसद के द्वारा पारित सीए कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया। यह संविधान का सम्मान है। और वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, नागरिकता का विषय तो पूर्ण राज्य का भी विषय नहीं हो सकता, और तो उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने पारित कर दिया। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जिस प्रकार के कार्य करते हैं उनका संविधान में कोई आस्था नहीं है। और अभिषेक मनु सिंघवी जी अभी कह रहे थे इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, आफ्टर दी 72nd एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देयर आर 3 tier ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें एक म्युनिसिपल और जिला पंचायत, एक स्टेट और एक सेंटर। तो मान्यवर ये तो राजीव गांधी जी लाए थे। तो आपके मन में All right, that's the parliamentary showdown over Delhi Services Bill. On that note, we're slipping into a short break. We'll be back with a lot more on this. Stay with us. Communal flashpoint at Delhi's doorstep. Amidst the flames and rioting, India Today reporters fearless on the ground. Stone pelting was so aggressive from the both sides. Entire market in the area has been shut right now. Attacked the cyber police station of Noor. Facts, questions, What resulted in the communal clashes? and first-hand reports. एकदम ही पत्थर आए हैं ऊपर से छतों पे से, गोली लग चली है, पीछे वाला शीशा टूट लिया। 100% accuracy amidst the blaze. We track the face of every story. India Today. India United. Very few people in the country have access to the Couture Week, and hence through our medium we're going to get you what really happened at the Couture Week. Let's first begin with the opening showcase of Falguni and Shane Peacock. Let's bring you a roundup of the beautiful showcase by Tarun Tahiliani and a gorgeous one while added by JJ Valaya as well. Here's a look. Designer Tarun Tahiliani presented his latest masterpiece capsule, For Eternity, at India Couture Week. With For Eternity, Tarun paid homage to the timeless allure of traditional craftsmanship and art. India's, as we've discussed before, a fashion tradition. This is a new Western interpretation where we are blending our craft with the Western idea of changing fashion and a modern fit and size-specific fit. It's taken me a long time to navigate myself back through a very organic but real process of what make me feel better, you know. I grew up, I thought Studio 54 was the last one.
Falguni and Shane Peacock's show had a strong social commentary. They shattered the glass ceiling with model Victor in a lehenga. So anyone now calling the lehenga bridal should now think twice, as inclusivity is the order of the day. Falguni and Shane Peacock opened the Couture week and had Kiara Advani as the showstopper. This year we wanted to do a lot of layering. If you noticed, we had a kurta and then we had a short jacket and we had a veil and we had dupattas. We just wanted to make it really dramatic and I think also we wanted to reinvent the Indian bridal scene actually. The modern bride wants to wear a jacket, they want to wear short jackets, they want to look cool. I guess inspiration that comes behind every garment, a lot of detailing, it just makes it look so elegant and yet so glamorous. The House of Valaya by J.J. Valaya celebrated the couture season in its new collection, Baroda. It was a marriage of craft and opulence that unfolded through 3 signature interpretations. It is based on various very interesting nuances from the past of Gujarat, which involve the Maratha Empire, the Mughal Empire, as well as the Portuguese. Lipan, the Kutch mirror work, everything put together to create a new sort of language and a new dialogue. In New Delhi, with Riya Modi, Shaithi Narula for India Today. You are watching India Today. क्षेत्र नहीं है। और फिर इतना ही नहीं, सिंगापुर में इनको बुलाया, इनविटेशन आता मेयर्स कॉन्फ्रेंस का, तो मुख्यमंत्री होते हुए जाना चाहते हैं। तो मेरे विचार से कम इनको थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। और एक पढ़ने लिखने पे एक तथ्य मैं जरूर बताना चाहूंगा। जब न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में इनकी तारीफ निकली थी तो इनके मुंह से निकल गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार, और उसमें इतनी तारीफ निकलवाना आसान नहीं है। वैसे निकलवाना शब्द निकल गया था। मगर मैं पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहता हूं महोदय कि न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का सबसे बड़ा अखबार नहीं है, वो है यमुनी शिंबुन जापान का। अमेरिका का भी सबसे बड़ा अखबार वो नहीं है, यूएसए टुडे। और इतना ये समझिए, इतना ही नहीं, भारत का टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, और वो भी उनसे अधिक हैं। तो मैं सिर्फ ये बताता हूं, अरे भाई जिस अखबार का नाम लेते हैं कम से कम उनको तो पढ़ लेना चाहिए था। मैं आपको अधिक समय न लेते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं महोदय कि इनको न पढ़ाई से मतलब है, इन्हें न पढ़ाई से मतलब है, न लिखाई से मतलब है, इन्हें तो बस कमाई से मतलब है, और वो भी ऊपर वाली कमाई से। और अंत में मैं कहना चाहता हूं सर, अंत में एक लाइन और कहना चाहता हूं कि आज सब लोग मिले, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिले, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, पुरानी धुरानी पार्टी, नई पार्टी, नई नवेली पार्टी, अजब अलबेली पार्टी, सब मिलकर एक हो गए। मगर प्राप्त क्या किया? दोनों ने सिद्धांतों से समझौता किया, और कांग्रेस ने भी इतना सयाना दांव चला कि इन्होंने अगर उनका हाथ पकड़ के दिल्ली अध्यादेश पे समर्थन लिया हो तो अविश्वास प्रस्ताव ले आए, लीड उनको मिल गई। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं अंत में कि इन लोगों को आखिर में क्या प्राप्त हुआ, ये पंक्ति कह के समाप्त करता हूं कि इनको विधेयक भी नहीं मिला और सम्मान भी नहीं मिला, यानी इज्जत भी गई, बात भी नहीं मिली। तो एक पंक्ति कहता हूं, न तुम ही मिले, आप लोगों के लिए लागू है, न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, दीद मतलब साइट, न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई। सुखेंदु शेखर रे, श्री सुखेंदु शेखर त्रिवेदी ने बड़े जोश के साथ और बहुत शेर शायरी के साथ उन्होंने बात की। त्रिवेदी ने शेर शायरी के साथ बहुत लंबी तकरीर की। अगर उसको उत्तर हमारे पास चतुर्वेदी है, अगर आप त्रिवेदी है तो हमारे पास चतुर्वेदी है। माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी, नहीं, डॉक्टर अभिषेक सिंघवी ने कवि का काम ज्यादा किया, वकील का कम किया।
कितना कवि का काम आपने किया। श्री सुखेंदु शेखर रे 9 minutes. Thank you. I am not going to make a political speech because the matter relates to a very important bill relating to National Capital Territory of Delhi. Sir, there is no sound from this microphone. I cannot shout. No volume. Volume, sir. No volume here. I can hear. But I cannot shout, sir. I cannot hear. There is no feedback. No feedback to my ear. Yes, some problems, sir. Good. Some problem. As I have stated, that I am not going to make any political statement, but my submission shall be confined within the parameters of this bill. On 19th of May this year, the Honorable President of India promulgated the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023, which negates a Constitution bench judgment of the Supreme Court dated 11th May 2023 that brought services under GNCTD. There could be some symbolism in the ordinance being promulgated in the middle of the night, as already stated by some of my colleagues, just a few hours after the Supreme Court closed for summer vacation. But I am not on that. Meanwhile, the ordinance has been challenged in the Supreme Court, and the matter has since referred to a constitution bench. During the pendency of the matter before a constitution bench of the highest court of the land, the government has introduced this present bill to repeal the ordinance and for further amending the GNCT Act 1991. I wondered as to whether heaven would have fallen had the government waited for the outcome of the Constitution bench where the ordinance is still pending. What is the urgency involved in the matter? What is the urgency? There is no whisper about the urgency in the bill or the statement which have been received just now after the introduction of the bill, that the aforesaid judgment, that is judgment dated 11th of May, posed certain challenges in the efficient administration of the government of NCT of Delhi, which needed to be addressed through appropriate legal interventions. According to me, this is a stigma on the highest forum of our judiciary, which must be deprecated by all conscious citizens of this country. Third, in the year 2021, in the matter of Madras Bar Association, the Supreme Court held inter alia, and I quote one line, a legislation can be declared as unconstitutional if it is in violation of the principle of separation of powers, the rule of law, and Article 14 of the Constitution, that is arbitrariness. Therefore, once there is such a judgment, which was delivered in 2001, government ought to abide by that judgment of Supreme Court, which is otherwise a requirement under the Constitution. I am coming to that later on. Third, the question is whether the Legislative Assembly of Delhi has powers over all matters in List 2, except the matters in entries 1, 2, and 18, which is public order, police, and land. In apparent defiance of the 11th May judgment, this bill seeks to amend the GNCT Act for abridgment of the powers conferred upon the GNCT legislation by the Constitution, because the entry number 41 is sought to be taken away, is sought to be inserted
through this bill. So 3 will be 4. Rightly pointed out by our senior counsel, Mr. Abhishek Manu Singh Bichi. Now, sir, when a constitutional bench comprising 5 judges of Supreme Court declares or interprets Article 239 AA3A of the Constitution, the same is binding upon all courts and authorities in India in terms of Article 141 and 144 respectively. Neither Article 239 AA3A nor Articles 141 and 144 can be negated without a constitutional amendment. I repeat, without a constitutional amendment, this cannot be done. And if at all the government brings, subsequently will have to bring, if they wish, because this legislation will be declared null and void. As a student of law, I understand. It will be done. But if the government at all in future brings a constitutional amendment bill, that will also hit by the principle of separation of powers, and federalism, which are the basic structures of the Constitution that was held by the Supreme Court right from the Keshavananda Bharati case till Minerva Mill case. Yes. Sir, this bill this bill seeks to render the GNCTD Assembly, or for that matter the Delhi government, virtually toothless and ineffective insofar as the services and service commission are concerned. Even a constitutional bill on this score shall be unconstitutional ab initio, as it will negate federalism and separation of powers already stated by me. Sir, now let me have a look at the bill once. Possibly that will be the final, because 7 minutes already elapsed. Come to part 4A. It says about provisions relating to the maintenance of democratic and administrative balance in the governance of National Capital Territory of Delhi. What a brilliant drafting. To maintain a balance, the original act came into being in 1991. We are in 2023. So for the last 33 years, there was no balance. There was no balance. That is why, all on a sudden, the Kumbhakarna has risen from the deep sleep to maintain a balance. Yes. Wow. Interestingly, the authority has been proposed to be created. Which authority? Already stated by other members. The Chief Minister, Chief Secretary, Home Secretary. Sir, please give it to us. Please give it to us. Very interesting bill. Chief Minister, Home Minister, Chief Minister, Chief Secretary and Home Secretary. And whatever may be recommended by the Chief Minister, if it is not accepted by the 2 bureaucrats, then also it will be passed and the Lieutenant Governor will accept it. So, Chief Minister will be what should I say? What should I say? Without any authority. He doesn't have any authority. The bureaucrat will prevail upon him. So in democracy, will of the people is supreme. Vox populi, vox dei. Sabar upore manush satya tahar upore nai. Will of the people. But here, the will of the people, which has been reflected through election, the duly elected, constitutionally elected government, his Chief Minister has no power. The bureaucrat will overrule the recommendations of the Chief Minister. This is a draconian bill. This is against all spirit of the Constitution, and every citizen of this country should oppose this bill in the manner, not only inside Parliament, even outside Parliament, voice is to be raised. Sir, finally, with your kind permission, I would like to quote from judgment online of former Chief Justice Y.V. Chandrachud, the father of the present Honorable Chief Justice of India. Quote, Parliament cannot, under Article 368,
expand its amending power so as to acquire for itself the right to repeal or abrogate the Constitution or to destroy its basic essential features. Here is a case where the basic features are being destroyed. And sir, according to me, All right, the BJP and Congress are now at loggerheads at a New York Times investigative report that's prompted the BJP to accuse the Congress of having links with China. The New York Times investigative report on how the Chinese government has actively peddled propaganda across the world, including India, echoed in the parliament and outside, as well as BJP demanded answers from the Congress, levelling serious allegations against the Gandhis of having links to Beijing again. BJP's Anurag Thakur raked up the funding of Rajiv Trust, once again demanding a detailed investigation. Anurag Thakur also lashed out at the Congress party. He accused them of attempting to shield the news website NewsClick when they were raided for alleged China links back in the year 2021. So what exactly was the New York Times report? What did it claim? That detailed investigative report has claimed that a US billionaire, Neville Roy Singham, is linked to multiple network outlets across the world and has financed the Chinese propaganda on behalf of the Chinese government. The report claims that in India, news website NewsClick was also financed by Singham to write propaganda pieces masked as independent content in favor of China. Congress, China, NewsClick are part of a umbilical cord. राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज़ एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। एक एजेंडा था, एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन ये लोग चलाते थे। कांग्रेस ने विदेशी लोगों के साथ हाथ मिलाने का प्रयास किया और यही नहीं, जब इनको निमंत्रण मिला सोनिया जी को, राहुल जी को, कब मिला? जब ओलंपिक्स खेल हुए तो कांग्रेस पार्टी को भी, गांधी परिवार को भी वहां पर न्योता दिया गया और ये लोग उस समय चाइना भी गए, खेल देखने गए थे, खेल करके आ गए। विदेशी नेविल रॉय सिंघम, ये सिंघम कोई सिंघम फिल्म की बात नहीं कर रहा मैं, ये नेविल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की और फंडिंग उसको कहां से आई? नेविल रॉय सिंघम को चाइना पीछे से करता है और इसमें नेविल रॉय का जो सीधा संपर्क है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक प्रोपेगेंडा आर्म के साथ है। ये रूट भी कहां कहां से हुआ? ये गौतम नवलखा का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भी एक आरोपी है। किस केस में? एल्गार परिषद के माओइस्ट लिंक में जो भीमा कोरेगांव केस है, उसमें अभी तक जेल में ये है, अंडर हाउस अरेस्ट है। यूएपीए लगा हुआ है इनके ऊपर। A couple of years ago, over 1,000 accounts on social media had to be removed when they were identified as ISI, Pakistan's ISI PR linked, who were fanning misinformation and violence in India. Then a few months ago, there were another 1,000 plus accounts that were removed that were being sponsored by and operated by Khalistani elements, again fanning misinformation and violence and lies and hatred against the government of India and our leadership. There is an attempt to rein in misinformation. These platforms jump along with their friends and rally behind this false cover of free speech. The right to free speech as guaranteed in our constitution is certainly not and must not and should not be a cover for misinformation directed at our nation's rise. And therefore, this revelation that a foreign country is actively funding platforms that are launching and have launched and continue to launch vitriol against our government, our country, our society, our religion, our faith, is something that all of us should be very aware of.
and we should all get together and have a consensus on how to fight misinformation in the coming years and coming days. See what happened. PM Care Fund also received the Chinese money, and not only that, Vinod Adani, brother of Adani, is a partner of Chinese person. What about that? And Prime Minister explained it that hasn't he received the funds in PM Care Fund from Chinese corporate houses? That is also to be discussed. Let us discuss all together. Why this only? Isolated, make it isolated case. Let all such matters to be discussed. Those who have been funded from China, Chinese forces. And what the Prime Minister said that time that we will boycott Chinese and ban this talk, etc. And afterwards, business transaction increased and many other relations have increased. And so far, the BJP has not in position to explain that how much money they have got from the Chinese companies. Let's now walk you through what the New York Times investigation exposes. Investigation exposes, number one, it was an orchestrated international propaganda toolkit by China. Point number two, Indian website NewsClick's link to the Chinese government was exposed to. Point number three, the Indian website NewsClick, which I just spoke to you about, was funded for propaganda pieces. The fourth point is that US billionaire Singham's role in funding propaganda was also exposed by this investigation by the New York Times. Point number five, the propaganda was disguised as independent content. All right, let's get to the flowchart now. The Chinese money trail and how it has been decoded. ED sources have also spoken to India today. So this is what our ED sources have indicated. You've got the Communist Party of China. You've got Neville Roy Singham. He's a tech billionaire who is living in Shanghai. 38 crore rupees was given to NewsClick. PPK NewsClick Studio Private Limited, they got the money to carry out this particular Chinese propaganda. 21 lakhs was given to Gautam Navlakha. Now, Gautam Navlakha happens to be NewsClick shareholder. So you'll get to know how it is all eventually goes back to be linked to the Communist Party of China as well. Aishwarya now joins us for the very latest development on this. Aishwarya, walk our viewers through this raging debate that is even taking place now in the Parliament on the back of this New York Times expose that we're talking about. Aishwarya, can you hear me? Can we get Aishwarya back in moments from now, please? Aishwarya will join us in moments from now to get us up to speed with the raging debate that is taking place in the Parliament on the back of this particular expose, which we're bringing to you. This is a New York Times expose. We got you the flowchart in terms of how the money was flown as well. Aishwarya is also back with us. Aishwarya, if you could walk our viewers through the Parliament storm on the back of this particular development, the back of this particular investigation by the New York Times. Well, it's all started with Nishikant Dubey. Let me tell you, he spoke up and then he spoke about the fact that NewsClick, something which was raided, an organization which has been raided by the Enforcement Directorate. They also went ahead and said that, in fact, it was raided for almost 5 days. They can now be traced back to China. They can now be traced back to Congress. And that is what the top leaders of the BJP also spoke about in a press conference. Anurag Thakur, who's looking at the INB ministry, also said that they have proof, which now speaks about the fact that there was propaganda which was being given out by NewsClick. In fact, the MOS for IT ministry also very categorically said that they have seen how misinformation was being spread by NewsClick. So clearly, what the ministers and the BJP at the moment is trying to speak is the fact that the government has proof, which is now tying China with Congress and in turn, making sure that both of them also have ties with NewsClick, an organization which, according to the government, was spreading anti-Indian sentiment across the country and also spreading out anti-Indian sentiment globally. So this is what the BJP at the moment is speaking about. Would you call this the biggest media scandal of 2023, and how does the Congress respond to this as well?
Well, we are still waiting, for the Congress to respond, because the BJP is now putting Rahul Gandhi in the dock. In fact, they're also spoken about all the trips that Rahul Gandhi has made to China over the past many years. Anurag Thakur categorically speaking about the fact that both Sonia Gandhi and Rahul Gandhi were in fact being invited by China, and both of them also went to China. Also speaking about the fact when Doklam was happening, that was the time when Rahul Gandhi was advocating that India now needs to have diplomatic ties and also needs to have back channel talks with China. So the BJP now putting the Congress party in the dock and saying that you, since the year 1962, have had some kind of back channel talks with China, and when the government has proof and when it has come to the fore that what NewsClick used to do, what China used to do with regards to our country, why you, as the leaders of the Congress party and your party Congress as a whole, are quiet about the entire matter. So now the BJP clearly putting the onus on the Congress party and also onus on those people who, according to the government, were spreading anti-India sentiment globally. All right, this is going to be our top focus. We'll come back to Aishwarya in moments from now, but I'm compelled to take a very short commercial break on that note. When we return, explosive revelation on pre-planned new riots. This and more in moments from now. You are watching India Today. Meet the men Monu Manesar and Bittu Bajrangi who inflamed Mewar, who triggered the fiery chain reaction. आपके वीडियोस ने जो है वो उकसाने का काम करा है इस यात्रा में। कोई उकसाने का कार्य नहीं किया, ना मैं उस यात्रा में गया। The key faces of the new nightmare. Live streamed provocations and poison. आधे घंटे की प्लानिंग नहीं है, ये कह रहे हैं कि बिट्टू ने बोल दिया, मैंने बोल दिया, वो इसको लोग तैयार बैठे थे वो बंदूक लेके। Cops hunt them, but we find them. Listen as they paint the full scary picture. Only on India Today television. UNESCO has recommended Venice to be added under World Heritage in Danger list ahead of its 45th meet that is to be held in September. Climate change and over-tourism are some major issues for which Venice has been recommended under the danger list. Take a look. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization has recommended that one of the most popular and fragile tourist destinations of Italy, Venice, be added to its list of World Heritage in Danger, a designation that is given when a vulnerable heritage site is in need of support. The recommendation to put Venice on the World Heritage in Danger list was made by UNESCO and its advisory body experts ahead of the 45th session of the agency's World Heritage Committee meet, which will be held in Riyadh, Saudi Arabia in September this year. Mass tourism, development projects and climate change are some major reasons behind UNESCO's recommendation to put Venice under the danger list. According to the organization, these issues are causing deterioration and damage to the building structures and to the urban areas, degrading the cultural and social identity of the property and threatening the integrity to its cultural, environmental, landscape attributes and values. UNESCO has asked the Italian government to ensure that utmost attention is given to Venice and its long-standing problems should be addressed that have been causing damage to the city. Over-tourism in Venice has been a serious issue. Venice is one of the places that is currently designated as a World Heritage Site because of its outstanding universal value, cultural and natural offerings. With Neha Kumari, Bureau Report, India Today. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices.
Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. As the Lok Sabha polls approach near, political showdown between opposition BJP is escalating. Prime Minister Modi took a jab at the opposition alliance, recalling that Mahatma Gandhi's Quit India movement was launched on 9th August. The Prime Minister said similarly the country wants dynasty, corruption and appeasement to quit India. Meanwhile, the opposition has slammed the Prime Minister Modi's remarks and called it a diversion from real issues like Manipur, Haryana, violence and inflation. साथियों, 7 तारीख के एक दिन बाद 9 अगस्त आ रही है। 9 अगस्त वो तारीख है जब ऐतिहासिक क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गूंज है, करप्शन, क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी, क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद, इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट, क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण, इंडिया छोड़ो। पूरे हिंदुस्तान ने और पूरे देश ने, पूरी इंडिया ने ये तय किया है कि इस बार 2024 में सिर्फ इंडिया को अपनाएंगे और इंडिया को ही जिताएंगे। इंडिया का मतलब है कि इंडिया जब होगी तो देश के अंदर में बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई दूर होगी, यहाँ पे किसानों के सम्मान की बात होगी, महिलाओं के सम्मान की बात होगी। ये इंडिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस इंडिया को पूरा हिंदुस्तान अपनाएगा। भारतीय जनता पार्टी को जाहिर सी बात है कि इंडिया से डर लगने लगा है, तभी इंडिया की बातें इतनी करते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया की बात न करके अगर मणिपुर पे बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता, अगर वो हरियाणा की जो घटना है उस पर चर्चा करते तो ज्यादा अच्छा रहता, टमाटर इतना महंगा इस पे बोल देते तो ज्यादा अच्छा रहता। प्राइम मिनिस्टर सेड भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, वोट बैंक की राजनीति भारत छोड़ो। तो व्हाई इज इट द ऑपोजिशन इज टेकिंग इट पर्सनली? ही हैज नॉट नेम्ड द ऑपोजिशन। That means the opposition knows that they represent Bhrashtachar, they represent Tushtikarana, they represent Parivarvad. Therefore, they are taking it personally. You are watching India Today. सड़कों पे लाठियां खाई, न जाने क्या क्या किया दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। और अंततः वो दिन आया जिस दिन वाजपेयी सरकार और वाजपेयी सरकार के उप प्रधानमंत्री आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी इस सदन के भीतर एक बिल लाए, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2003, जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देता है। ये बिल आडवाणी जी इस सदन के भीतर लाए और कहा कि दिल्ली को अधिकार देने की जरूरत है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भाजपा दिलाएगी। यहां भी बात खत्म नहीं होती सर। इसके बाद 2013 के अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। इनकी जून 2013 में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, उसमें मता पास कर कहा हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। यहां तक कि इनके सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। ये इन सब ने सर लगातार बातें कही और
दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के सामने रखती रही। सर, ये बिल सिर्फ संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं है, ये बिल लाल कृष्ण आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन लाल खुराना जी का, सुषमा स्वराज जी का, अरुण जेटली जी का, सबका अपमान करने का और उनके 40 साल के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। सर, मैं माननीय गृह मंत्री जी का बयान लोकसभा में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने यह बात रखी थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, नेहरूवादी मत बनिए, आडवाणीवादी बनिए, वाजपेयीवादी बनिए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आज आपके पास ऐतिहासिक मौका है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सर, इस बिल को लाने का असल कारण क्या है? यह बिल क्यों लाया गया है? पिछले 25 साल में दिल्ली में 6 बार विधानसभा के चुनाव हुए। 6 के 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। यहां तक कि 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बनाई। क्योंकि ये पिछले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाए और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जानते हैं कि अगले 25 साल भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो सरकार को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। क्या ना रहेगी सरकार और ना रहेगा चुनावों का महत्व, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन मैं आज इस मंच से भाजपा से अनुरोध करूंगा कि कम से कम लाल कृष्ण आडवाणी जी को न्याय दीजिए, कम से कम उनकी इच्छा पूरी करिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सर, मेरा दूसरा भाग कि कैसे ये बिल एक संवैधानिक पाप है। सर, पहली चीज, ये अब्यूज ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स है, आर्टिकल 123 जो संविधान का देता है। संविधान ये कहता है, और वाईवी चंद्रचूड़ साहब का AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बड़ा महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है, जिसने कहा कि ऑर्डिनेंसेस सिर्फ आपातकालीन और विषम परिस्थितियों में लाए जाएंगे। ऐसी कौन सी आपातकालीन और विषम परिस्थितियां आ गई कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन के भीतर बदलना पड़ गया? दूसरा सुप्रीम कोर्ट की दूसरा बिंदु, यह सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन के भीतर 5 जजों के संवैधानिक पीठ के सर्वसम्मति के फैसले को बदल के आज भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मांगते। आपको जो ऑर्डर जारी करना है करो, हम चंद दिनों के अंदर ऑर्डिनेंस लाकर उस फैसले को बदल देंगे। दे हैव चैलेंज द मैजेस्टी ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सर, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आजकल जो ऑर्डिनेंस लाने की जो एक फेटिश इस सरकार ने देखी, चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल हो, चाहे वो फार्म बिल हो, चाहे ईडी के डायरेक्टर का एक्सटेंशन हो, जो ये सारी चीजें ऑर्डिनेंसेस के माध्यम से इन्होंने करी थी, इस बिल का हश्र भी वही होगा जो सारे